Very good morning, all. Good morning. Namaskar. We'll start in just 1 minute. I'm ready. आप लोग तैयार हैं मित्रों? गुड मॉर्निंग. आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? बोलिए बाबा. आई एम गुड. आई एम गुड. बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आप. गुड. चलो चलो शुरू करते हैं. चलो चलो. टुडे आई विल डिस्कस अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स. क्वालिटी का मतलब क्वालिटी क्वेश्चंस. ये सेशन ऐसा होने वाला है कि आपको आई थिंक एक्सी में जो एटीडी के क्वेश्चंस आते हैं तो मैक्सिमम यू कैन इजीली डू इट. द सिलेक्शन इज इन दैट मैनर. ओके. नेक्स्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट में जो आता है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, क्या पता, हु नोस, अगर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे एटीडी से आराम से कर लेंगे. चलो रेडी है एक बार सब लोग? यो यो बोलो. यो 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 यो. चलो स्टार्ट करते हैं सर. टुडे वी हैव ग्रैंड टेस्ट एट 2:30. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे सर. स्टार्ट करें सर जी. इसको बाजू रखेंगे सर. यो यो ठोको. चलो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. आप लोग तैयार हैं मित्रगणों? मित्रगणों. मित्रगण. सर योर मॉक टेस्ट क्या बोलता है? मॉक टेस्ट. देखो, those students who have enrolled in my mock test, they can give test in between 2:30 p.m. to 11:59 p.m. उसके बाद क्लोज हो जाएगा. आज आज दे सकते हैं आप. इवन यू कैन गिव एट 7 o'clock इन द नाइट आफ्टर योर ऑफिस आवर्स और 8 o'clock इन द नाइट आफ्टर योर ऑफिस आवर्स. ओके. चलो वही फ्लेक्सिबिलिटी रखे सर. चलिए स्टार्ट करते हैं सर. आई एम स्टार्टिंग सर इन द नेम ऑफ ऑल माइटी. चलो टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. आराम से. फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी रख लेंगे सर. सर आई विल गिव मॉक टेस्ट. हाँ, एक से बढ़कर एक मैराथन सेशंस. आई एम सो हैप्पी दैट आपका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया. दैट इज द मोटिवेशन. कल मैं नहीं था सर. आई ट्रैवल्ड बिकॉज कुछ जरूरी काम था. ट्रैवल रात आने के बाद भी क्वेश्चंस पूरा सेट करके आपके लिए किया सर. आई स्वेयर. ओके. कमिटमेंट इज कमिटमेंट. चलो नाउ कंसीडर consider an atmospheric pressure which is an air water vapor pressure, air water vapor mixture considered to be an ideal gas at 100 kilopascal. So the total. अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों कर दिया जानू ना, जानू ना. थोड़ा ऐसा कर लेंगे. ये कर रहा हूं. हाँ. द टोटल प्रेशर इज 100 किलो पास्कल. ठीक है. मैं एक्सप्लेन करते हुए कॉन्सेप्ट्स देते हुए चलूंगा सर. ओके चलो कोई बात नहीं. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर. मतलब क्वालिटी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे सो दैट आपको भी टाइम सेव होगा. हाँ. द टोटल प्रेशर इज 100 किलो पास्कल. द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड and the relative humidity
द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 40%. ठीक है सर जी. ओके. द सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. तो पीवीएस एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज हाउ मच सर? कितना है सर? 1.705. 1.705 ऑल आर इन किलो पास्कल. कोई बात नहीं सर. The value of gas constant is given for air and for water vapor. The humidity ratio, मतलब ओमेगा पूछा है सर. The humidity ratio omega. So what is the value of omega? So the humidity ratio or omega is given by 0.622 PV by P total minus PV. So anyone, under what assumptions you have derived this equation, sir? Under what assumptions you have derived this, sir? We have derived this under the assumption that water vapor and air, dry air, both are treated as an ideal gas. And what is the pressure of water vapor? Very low. That's why we can treat a gas as an ideal gas only under low pressure. So यहाँ पे तो vapor का pressure बहुत कम है, so we can treat it as an ideal gas. ये सब logics important है sir. Okay, no problem at all. So put करो. So omega is equal to 0.6. Oh my God, PV is not known. So how can I find PV? Phi is equal to PV by PVS. So relative humidity phi is 0.4. PV we do not know, and PVS is already given. What is PVS, sir? 1.705. If this is in kilopascal, this will also be in kilopascal. So can you give me the value of PV? मैं जेब में रख लेता हूं सर. 0.4 into 1.705. This is 0.682. ठीक है सर. Once it is known, यहाँ पे put कर लेना सर. They are in kilopascal, sir. All are in kilopascal. What is the total pressure given? 100 atmospheric pressure. PV is 0.682 by P total is 100 minus PV is 0.682. तो ये आएगा सर. Anyone with the answer? Anyone with the answer, sir? फटाफट. So 0.682 divided by 100 minus 0.682. तो ये होगा into 0.622. So this is coming out to be 4.271 into 10 power minus 3. Actually, physically, what is omega, sir? It is the ratio of mass of vapor to the mass of dry air. So it is expressed in kg vapor per kg of dry air. तो इसका यूनिट हो गया kg vapor per kilogram of dry air. Can you tell the meaning of 10 power minus 3 kg? Because 1 kg is equal to 1000 gram, or 1 gram is equal to 10 power minus 3 kg. So 10 power minus 3 kg is gram. So therefore the humidity ratio is given by 4.271 gram of vapor per kilogram of dry air. तो ऑप्शन क्या है सर? ग्राम ऑफ वेपर. तो ग्राम ऑफ, देखो, ग्राम ऑफ वेपर पर केजी ड्राई एयर. सो आंसर इज ऑप्शन ए. इज इट करेक्ट सर? इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? मित्रगणों, सब लोग थिंक दैट यू आर इन एग्जामिनेशन. सब लोग थिंक दैट यू आर इन एग्जामिनेशन. मित्रगणों, ओके, नेक्स्ट. विदाउट वेस्टिंग टाइम विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर. पढ़िए सर. कम ऑन, कम ऑन. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है सर. प्लीज, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. हाँ. A coal-fired power plant operating on Rankine cycle. Ideal Rankine cycle. Ideal means what? No irreversibilities. मतलब isentropic expansion. Pumping is also isentropic. That is ideal. Okay. The boiler pressure is 32 bar and the condenser pressure is 0.75 bar. ठीक है. The exit state from the turbine is, हाँ, from the turbine the exit is dry saturated, sir. From the turbine the exit is dry saturated. The properties are given. पूछा क्या है देखो. Superheated properties at 32 degrees and 592, which is entry to the turbine. This is actually H. एक सेकंड सर. मित्रों, do not get confused. मैं इसको कर दूंगा सर इंतजाम इसका. मैं कर देगा. हाँ, पढ़ो सर सब. नाउ यू रीड. हाँ, क्या पूछा है सर? द सुपरहीटेड प्रॉपर्टीज आर गिवन. द स्पेसिफिक हीट एडिशन इन द बॉयलर, हीट एडिशन इन द बॉयलर एंड स्पेसिफिक पंप वर्क. अच्छा क्वेश्चन है सर. एंड स्पेसिफिक, अच्छा क्वेश्चन है सर. मतलब देखो,
My dear students, let's draw the cycle first. It's a simple cycle. Which cycle is this, sir? It is a Rankine cycle. It's a Rankine cycle. इसको zoom out करूंगा so that देखिए सर, आराम से देखो, देखो. Let us take TS diagram. Clearly he said the, देखो एक बार क्वेश्चन देखो सर. The exit, देखो एक बार, the exit from the turbine is dry saturated. जो टर्बाइन से बाहर आ रहा है, it is dry saturated. I repeat, this is the point. देखो एक बार, this is the exit from the turbine and it is dry saturated. So let us take this as 1, this as 2, this is condensation, that is 3, this is pumping, that is 4, and then constant pressure heat addition in the boiler. So देखो एक बार, 1 to 2 is occurring in turbine, 2 to 3 is occurring in condenser, 3 to 4 is occurring in pump, and 4 to 1 is occurring in boiler. So he is asking, and each device is treated as a steady flow device. So if I apply steady flow energy equation by neglecting kinetic and potential energy changes, everything will be expressed in terms of enthalpies. Am I right, sirs? देखो एक बार, देखो एक बार. So what is heat supplied in the boiler? Heat supplied in the boiler is, we are supplying from 0.4 to 0.1. 0.1. So it will be H1 minus H4. Excellent, sir. Next, what is the pump work, sir? अगर मैं minus को हटा दूंगा, the pumping is taking place from 3 to 4. So therefore, it is H4 minus H3. Actually, if I apply, you get H3 minus H4. लेकिन minus of H4 minus H3. So the pump work is H4 minus H3. यहां तक सभी को समझ में आया सर? यहां तक सभी को समझ में आया? देखो, which enthalpy will be more? थोड़ा common sense use करना. From 3, we are supplying energy to the fluid. So therefore, and at 4, it is coming out. So therefore, this much is the pump work. So definitely H4 will be greater than H3. तो ये डिफरेंस का वैल्यू पॉजिटिव है. एक्चुअली मेरा इक्वेशन आता है, ध्यान से सुनिएगा सर. एक्चुअली माय इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस. एक्चुअली मेरा इक्वेशन ये आता है सर, ये आता है. समझ में आ रहा है सर? ये आता है. तो हम ना नेगेटिव, एक्चुअली सॉरी, एक सेकंड प्लीज, मैं आपको आराम से बताऊंगा सर. थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. तो अवॉइड दैट कंफ्यूजन आई एम टेलिंग यू सर. एक बार देखो, लेट मी अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बिटवीन 3 एंड 4. तो H3 प्लस C3, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट करेंगे, C3 स्क्वायर बाय 2 प्लस Z4G प्लस Q इज इक्वल टू H4 प्लस C4 स्क्वायर बाय 2 Z4G प्लस W. सो वी एज्यूम इट टू बी आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक. तो ये गया. तो W इज इक्वल टू H3 माइनस H4. तो ये आता है सर एक्चुअली. तो कैन आई राइट दिस एज माइनस ऑफ H4 माइनस H3? यस. ये सब क्यों बता रहा हूं सर? आपको कंफ्यूज हो जाएंगे सर आप. यू विल गेट कंफ्यूज. ये सब अवॉइड करने के लिए बता रहा हूं सर. एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन. एंड वन मोर थिंग, मेरे प्यारे दोस्तों, द ओपन सिस्टम वर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस VdP. ठीक है सर. देखो एक बार, दिस इज फॉर ओपन सिस्टम. इन क्लास आई डिराइव द इक्वेशन टू अप्लाई दिस इक्वेशन. इसके लिए सिर्फ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करने के लिए ओनली वन कंडीशन इज रिक्वायर्ड, द फ्लो हैज टू बी स्टेडी. उसके बाद में प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, डजंट मैटर. तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई. देखो सर, मैं कॉन्सेप्ट्स देते हुए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कल एग्जाम में यही गड़बड़ होता है. सो टू अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो the only requirement is the process must be steady. It doesn't matter whether it is reversible or irreversible. मतलब आप steady flow energy equation you can apply for reversible as well as irreversible process. But to apply this equation, the process has to be reversible only. तो ये सिर्फ और सिर्फ reversible के लिए ही apply होगा, otherwise नहीं होगा सर. तो what are the conditions for applying this equation? Kinetic energy change, potential energy change is neglected. The flow has to be steady and it should be reversible. लेकिन ऑलरेडी आइडियल बोला है, ये ऑलरेडी रिवर्सिबल है, तो ये दोनों इक्वेट करेंगे. तो आज से व्हेनेवर द पंप वर्क कम्स इनटू पिक्चर, कुछ नहीं, अगर रिवर्सिबल है ये दोनों इक्वेट कर लेना, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल. ये तो रिवर्सिबल के लिए है, ऑलरेडी रिवर्सिबल बोला है, आइडियल बोला है, दोनों इक्वेट करना. तो माइनस VdP इज इक्वल टू माइनस ऑफ H4 माइनस H3. सो देयरफॉर ये माइनस गया, तो VdP इज इक्वल टू H4 minus H3. So from today onwards, आप रैंकाइन साइकिल में कुछ मत करना सर.
द डिफरेंस ऑफ हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। पंप कहां से पंप में फ्लूइड कहां एंटर हो रहा है सर? यहां हो रहा है, तो यहां, so therefore it will be the specific volume at 3 dp. What is the meaning of dp? It is the difference of pressure. ये कंडेंसर प्रेशर है और ये है बॉयलर प्रेशर, so it will be boiler pressure which is P1 minus condenser pressure which is P2 or P3. So therefore this is the difference, and this is H4 minus H3, and you should check the consistency of units. अगर ये किलोजूल पर केजी में है, दिस शुड आल्सो बी इन किलोजूल पर केजी। ये कब पॉसिबल होगा सर? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मीटर क्यूब पर केजी एंड द प्रेशर यूनिट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो पास्कल। तो मीटर स्क्वायर गया, किलो न्यूटन मीटर इज जूल, किलो जूल पर केजी। यस, if this is in kilojoule per kg, this should be in kilopascal, this should be meter cube per kg. Up to this is it clear my dear loving students? यहां तक सभी को समझ में आया सर? बिल्कुल आया सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो नाउ कैन आई कैलकुलेट दी पंप वर्क, क्योंकि ये आइडियल है। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम? मित्रों इधर देखना सर, इधर आराम से देखो। हाँ मित्रों इधर देखो, कहां गए रहे हो? यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम्स दिया सर, देखो देखो एक सेकंड। हियर स्पेसिफिक वॉल्यूम्स आर गिवन, तो which specific volume is to be taken sir? Here specific volumes are given. The fluid is entering the pump at 3, मतलब low pressure liquid specific volume, low pressure, ये this is low condenser pressure, this is high boiler pressure। तो low pressure liquid का क्या लेना है? specific volume। तो लो प्रेशर इज दिस, स्पेसिफिक वीएफ ही दिया, लिक्विड का ही दिया 0.001037। so therefore the pump work is given by VDP। so therefore pump, so कहां पे एंटर हो रहा है? पंप पे 3, तो you should take specific volume here, it is condenser pressure low, liquid VF, low pressure VF 0.001037, 0.001037 into difference of pressure। The boiler pressure is 32 and the condenser pressure is 0.75। यहां पे प्रेशर दिया, लेकिन ये दोनों बार में है सर। These are in bar मित्रों, these are in bar। 1 bar is 100 किलो पास्कल, तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे that will be in किलो पास्कल। so this work will be in किलोजूल पर केजी। anyone with work sir? anyone with work? फटाफट बोलो रे। मैं आई एम नॉट हैप्पी विथ यू सर, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। ये आ रहा है, ओ 100 किलो पास्कल, ये 1000 क्यों कर रहा हूं रे? ये 100 है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। 1 बार इज 100 किलो पास्कल, तो दिस शुड बी 100 मल्टीप्लाई करना सर जी, 100 मल्टीप्लाई करना, बिकॉज दिस इज बार टू किलो पास्कल। ठीक है सर जी। सो ये आ रहा है 3.24 ना, एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट। सो द पंप वर्क इज 3.4 किलो जूल पर केजी। एक बार ऑप्शंस देख लेना सर, 3.24 किलो जूल पर केजी, 3.24 3.24। सो देखो इन एग्जामिनेशन इफ देर इज ओनली वन ऑप्शन विथ 3.24, बाकी का क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना सर, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यहां पे 2 है 3.24, तो ये काट दो, ये कार्ड उल्टा का मींस रिमूव, यू रिमूव दिस। अब देखो नाउ ही इज आस्किंग, क्या पूछा है सर? देखो द हीट एडिशन इन बॉयलर, बॉयलर में कितना हीट सप्लाई हो रहा है? बताओ सर कितना हो रहा है? 4 से लेकर 1। तो कैन आई राइट हीट सप्लाई इन बॉयलर इज, अगर हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे H1 में H4। और एक बात है सर, रैंकाइन साइकिल में कृपया आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई मत करना सर, बिकॉज इन रैंकाइन साइकिल द बॉयलर प्रेशर इज सो हाई, सो यू कैनॉट ट्रीट अ गैस एज आइडियल गैस व्हेन द प्रेशर्स आर वेरी हाई। लेकिन आप आरएसी में वेपर कंप्रेशन साइकिल में अप्लाई कर सकते हैं सर। ओके चलो आराम से। नाउ हाउ कैन आई फाइंड? सो H1 ऑलरेडी गिवन, दिस इज द सुपरहीटर। इधर देखो क्वेश्चन देखो, सुपरहीटेड स्टीम प्रॉपर्टीज एट 32 डिग्री एंड 592। ये प्रेशर है 32 एंड ये टेम्परेचर है 592। तो यहां का एंथैल्पी दे रखा है सर, हाउ मच इज दैट एंथैल्पी सर? 3663। सो इट इज 3663 माइनस H4। मित्रों H4 पता नहीं है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? H4 पता नहीं है, क्या कोई बता सकते? अभी आपके टीचर ने बोला H4 minus H3 is pump work। देखो H4 minus H3 is pump work, so H4 minus H3, already pump work is 3.24,
सो अगर कोई डाउट है माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होना सर, सिर्फ उसका वीडीपी का मैग्नीट्यूड ले लेना, मैग्नीट्यूड लेने के बाद डेफिनेट मैग्नीट्यूड ले लो, प्लस माइनस छोड़ दो, तो ये एंथैल्पी ज्यादा होगा, दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दैट मैग्नीट्यूड, ऑलरेडी आई हैव डिराइव्ड, फिर भी मैं आपको अगर एग्जाम में कंफ्यूज है तो बोल दो। हाँ, व्हाट विल बी H4 सर? इट विल बी H3 प्लस 3.24। आप H3 का मीनिंग बताइए, व्हाट इज H3? इट इज द लोअर प्रेशर लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड एंथैल्पी, लोअर प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड एंथैल्पी, लोअर प्रेशर, एक मिनट, लोअर प्रेशर मित्रों, एक सेकंड सर, हाँ, लोअर प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड एंथैल्पी, सो 384.36, 384.36 मित्रगणों, 384.36, दिस इज H4 इज इक्वल टू 384.36 प्लस 3.24, कितना आ रहा है सर ये? एनीवन विथ H4? मैं एक क्वेश्चन में सारे कर दे रहा हूं सर, 384.38 प्लस 3.24, no one is giving sir, no one is given, 387.62, once that is known, अगर आपको बॉयलर का हीट चाहिए मित्रगणों, 387.62, 387.62, तो यहां पुट करना सर, यहां पुट करना, H4 is 387.62, तो डिफरेंस ले लो सर, -3663, तो ये आ रहा है 3275.4, करेक्ट, 327.38, तो 3275.38, तो दिस वैल्यू इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो एक ही क्वेश्चन में वी हैव डन सो मेनी थिंग्स, इज इट क्लियर माय डियर लविंग स्टूडेंट्स? माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अमेजिंग अमेजिंग, चलो आगे बढ़े सर, मित्रगणों, क्लियर क्लियर क्लियर, अंजू सर जी, इज द क्वेश्चन क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ये पढ़ो सर, प्लीज रीड द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। A person wishes to determine the humidity ratio. What is humidity ratio? Omega. In air at higher altitude. From the available values of relative humidity and Rebel using psychrometric chart. However, by mistake, he uses the chart which is meant for sea level. The actual moisture content will be. एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सर, प्लीज प्लीज एक बार क्वेश्चन को पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सर। सर, लाइफ में डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज आप डिसिप्लिन रहो, अच्छे स्टूडेंट्स बनो और अच्छे सिटीजन्स बनो, पूरा ईगो ये सब छोड़ देना, कंपेयरिंग विथ अदर्स ये सब छोड़ देना। एनीवे आई एम टेकिंग वन क्लास ऑन दिस, चलो, बिकॉज आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी द बेस्ट स्टूडेंट्स। चलो ये करेंगे सर। एक्चुअली क्या बोल रहा है सर, ए पर्सन हैज गॉन टू हायर एल्टीट्यूड, मतलब हाइट पे गया, मे बी 10 किलोमीटर हाइट या 15 किलोमीटर हाइट, जो भी है, वट एवर इट मे बी, सम हाइट गया, वहां पे ही इज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा। बट अनफॉर्चुनेटली देखो सर, when I was developing psychrometric chart, I told that this chart is drawn for a fixed pressure, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए होता है सर। तो वॉट एवर दी साइक्रोमेट्रिक चार्ट वैल्यूज वी आर टेकिंग ना, अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टेबल हो या साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, दीज आर ऑल वैलिड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 100 किलो पास्कल पे हम लाते हैं सर। आई रिपीट सर, ऑल दीज आर फॉर 100 किलो पास्कल के लिए, ये सारे 100 किलो पास्कल के लिए, ठीक है सर। बट वो बोल रहा है वही चार्ट, द सेम चार्ट इज टेकन टू द हायर एल्टीट्यूड, मतलब जो 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 हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए डेवलप किए थे, वॉट एवर द चार्ट इज डेवलप फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज टेकन एट हायर एल्टीट्यूड्स। So if I use the same values, whatever the atmospheric conditions are used, so what will be the value of omega? Will that give the correct value or greater value or lower value? एक बार common sense देख लेना सर, एक बार common sense देख लेना सर, देखो एक बार, omega is equal to 0.622 PV by P total minus PV, ये है सर, ये है वैल्यू। तो देखो पीवी तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर वेपर,
P total. What is P total? It is the total atmospheric pressure. Now you tell me, what will happen to the atmospheric pressure when you go to higher altitude? At higher altitude, PT decreases, correct ना? तो अगर मैं सेम वैल्यू यूज कर रहा हूं, एक्चुअली हकीकत में PT कम है, तो हम क्या वैल्यू ले रहे हैं सर? हम क्या वैल्यू ले रहे हैं? हम ज्यादा ले रहे हैं सर। समझ में नहीं आ रहा सर? सो एक्चुअली PT वैल्यू क्या होना चाहिए? नहीं आया समझ में? अरे ये लोगों को समझ में आ रहा है सर? बड़े लोगों को देखो, एक्चुअली ऊपर में PT विल बी लेस। अगर एक्चुअली एट हायर एल्टीट्यूड PT विल बी लेस, अगर PT कम है तो ओमेगा क्या होना चाहिए? एट हायर एल्टीट्यूड्स PT विल बी लेस। ऊपर जा रहा है, मे बी 0.9 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर यहां पे है, तो मे बी 0.9, मे बी 0.93, ये कम होगा। अगर ये कम होगा, हकीकत में ओमेगा विल बी मोर। Actually omega will be more. Actually omega will be more because PT will be less. जब PT कम है, जब PT कम है तो actual omega will be more. But I am using the same chart. जब हम सेम चार्ट यूज कर रहे हैं तो ओमेगा क्या देगा सर? हम हाइयर वैल्यू ओमेगा ले रहे हैं। इंस्टेड ऑफ, फॉर एग्जांपल, लेट at higher altitudes, let at higher altitude P total be equal to 90 kilopascal. तो एक्चुअली देखो, वी आर टेकिंग 100 किलो पास्कल, क्योंकि सी लेवल पे 100 किलो पास्कल है, हम 100 ले रहे हैं, हम ज्यादा ले रहे हैं। अगर हम ज्यादा ले रहे हैं सर, देखो देखो, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100, तो इंस्टेड ऑफ 90 हम लोग 100 ले रहे हैं। अगर हम 100 ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो एक्चुअली हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका ओमेगा क्या आएगा सर? कम आएगा। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सर? इंस्टेड ऑफ टेकिंग 90, इंस्टेड ऑफ कम लेने का हायर एल्टीट्यूड पे, हम ज्यादा ले रहे हैं सर। अगर हम ज्यादा ले रहे हैं तो ओमेगा कम बताएगा। सो एक्चुअली कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। इज इट करेक्ट सर? कौन है? हाँ, पीवी तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है ना, प्रेशर पे है ना सर, समझ गए ना? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, ठीक है? टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं किया सर। ओके चलो, देखो, तो व्हाट इज द आंसर सर? देखो, द एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट विल बी, मुझे बताओ, द एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा सर? ये ज्यादा है, ये कम है, तो वो कहाँ है रे? हाउएवर बाय मिस्टेक ही यूजेस चार्ट मेंट फॉर, ये सवाल पूछ रहे हैं सर। एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट हम क्या ले रहे हैं सर? ओमेगा को, पीटी को क्या ले रहे हैं सर? ज्यादा ले रहे हैं। अगर ज्यादा ले रहे हैं हम, ये ज्यादा ले रहे हैं हम, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 90, हम 100 ले रहे हैं। जब ये ज्यादा ले रहे हैं तो ये वैल्यू कम होगा, तो एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट विल बी लेस देन। नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा? इज इट क्लियर सर? क्या हो रहा है सर मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी? अरे यार, एट हाइयर एल्टीट्यूड्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी टोटल? इट विल बी लेस। इट विल बी लेस। अगर लेस है तो ये वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो लेस होगा ना, इट विल बी लेस। द एक्चुअल, हाँ, एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट विल बी मोर। समझ गए ना? इज इट क्लियर? दोबारा बता रहा हूं सर, लेट मी एक्सप्लेन, एक सेकेंड। लेट PT is equal to 90, the actual. Let PT is equal to 100, sea level. Is it clear, sir? PT is equal to 100, it will be at the sea level. Is it okay? Chalo. Omega is equal to 0.622 PV by P total minus PV. ये एक्चुअली हम डिटरमाइंड वैल्यू है सर, ये डिटरमाइंड है, ये डिटरमाइंड है। तो व्हाट विल बी एक्चुअल सर? Actual will be 0.622 PV by P total is 90 minus PV. This is the actual. ये कम है तो ज्यादा होना चाहिए। ये this will be, let us say this is omega 2 मान लो, ये omega 2, ये omega 1 मान लो, omega 1। तो ये ज्यादा है तो ये, when the denominator is more, this will be less. Correct or not? When this value is more, ये ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये वैल्यू कम होगा। Omega 1 will be less than omega 2. Is it clear, sir?
वॉट एवर यू आर डिटरमाइनिंग, जो आप डिटरमाइन किए, इट विल बी लेस देन द एक्चुअल वैल्यू. इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट आया सर? हे भगवान, क्लियर? ये छोटे क्वेश्चन को आप इतना टाइम ले रहे, ये करो, ये करो. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो रे. क्लियर? ये करो. मस्त क्वेश्चन है सर, ये भी मस्त क्वेश्चन है. आर यू रेडी? A domestic refrigerator provides 80 watt of refrigeration at minus 18 degree for the freezer and 40 watt of refrigeration at 5 degree for fresh. मतलब दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स है सर. आर वी क्लियर? देर आर टू अलग अलग कंपार्टमेंट्स. वन इज फॉर द फ्रीजर एंड द अदर इज फॉर द फ्रेश फूड कंपार्टमेंट. एक बार फ्रीजर का लिखेंगे सर, वन विल राइट फ्रीजर, वन इज फूड कंपार्टमेंट. फूड कंपार्टमेंट के लिए फूड कंपार्टमेंट. ठीक है, देखो फ्रीजर के लिए व्हाट इज द लोअर टेम्परेचर? माइनस 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज द लोअर टेम्परेचर. ठीक है सर. एंड व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी सर फ्रीजर के लिए? 80 वॉट. एंड इसके लिए द टेम्परेचर इज कितना सर? एंड फॉर द कहां गया? फॉर फ्रीजर एंड 40 वॉट फॉर रेफ्रिजरेशन एट 5 डिग्रीज. सो फूड कंपार्टमेंट के लिए the lower temperature is 5 degree and what is the refrigeration effects are capacity? 40 watt. I repeat sir, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो. आप लोग सब तैयार है सर? आप लोग सब तैयार है? देखो देखो, a domestic refrigerator provides 80 watt of refrigeration at minus 18. At minus 18, 80 watt is provided at minus 18 for freezer and 40 watt of refrigeration at 5 degrees centigrade for the fresh food compartment के लिए. The refrigerator is placed in a room which is maintained at 35. मतलब what is the higher temperature sir? So the higher temperature is 35 degrees centigrade. So the higher temperature is 35 degrees centigrade. So what is the minimum power requirement for the refrigerator? एक second look at. So minimum power requirement. मित्रगणों, minimum power requirement. When do you think the power requirement will be minimum? इनपुट, पावर इनपुट मींस आप सप्लाई कर रहे हैं. कब मिनिमम होगा? व्हेन इट इज रिवर्सिबल. समझ गए ना? व्हेन द डिवाइस ऑपरेट्स ऑन रिवर्सिबल मोड. सो देयरफॉर रिवर्सिबल का मतलब इट्स अ रिवर्स कार्नोट साइकिल. करेक्ट है ना? तो आप देखो सर, यहां पे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई डू इज आई विल कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड फॉर द फ्रीजर, आई विल कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड फॉर फूड कंपार्टमेंट. टोटल पावर रिक्वायर्ड विल बी दिस प्लस दिस. यस एग्जैक्टली. देखो सही बोले सर, ये आरसी होगा. जनरली आर ई एंड आर सी आर इंटरचेंजेबल. चलो बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले. आर ई एंड आर सी आर इंटरचेंजेबल. अगर वॉट या किलोवाट में है, इट इज आर सी. किलो जूल पर केजी आर ई, बट पीपल यूज इंटरचेंजेबली. उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है सर. विल इट बी ओके सर? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं सर. देखो सीओपी विल बी इक्वल टू RC बाई पावर इनपुट. RC बाई पावर इनपुट. बट ये कौन सा रेफ्रिजरेटर है? रिवर्सिबल है. क्यों रिवर्सिबल है? मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट. जब पावर रिक्वायरमेंट मिनिमम है, सीओपी मैक्सिमम. मैक्सिमम सीओपी क्या होगा? टी लोअर बाई टी हायर माइनस टी लोअर. तो इसका पावर कैलकुलेट करो. तो इसका इज इट ओके सर? ओके. आरसी कितना है सर? 80 बाई पावर इनपुट शुड बी इक्वल टू व्हाट इज टी लोअर? इट शुड बी इन केल्विन. टी लोअर 273 माइनस 18. टी लोअर 273 माइनस 18 तो कितना आ रहा है सर? ये 255 बाई whenever it is difference in temperature, it doesn't matter whether it is in Kelvin or degree Celsius. कन्वर्ट करने की जरूरी नहीं. करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा. डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 35 माइनस ऑफ माइनस 18. अरे यार इसको केल्विन में करो करो तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो पावर इनपुट कितना आ रहा है सर? 80 इंटू 35 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 255. ये आ रहा है. दिस पावर इनपुट इज
16.6। अगर ये वॉट में है तो वॉट में आएगा। ध्यान से सुनिएगा सर, क्या ये बात सबको समझ में आई सर? सुनो 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 सर, सुनो। दिस मच इज द पावर रिक्वायर्ड फॉर फ्रीजर। अब पावर रिक्वायर्ड फॉर फूड कंपार्टमेंट, आरसी। देखो, आरसी बाई पावर इनपुट इज इक्वल टू T lower by T higher minus T lower. What is RC? 40. I do not know the power input. That should be equal to T lower. 273 plus 5 is 278. So ये difference नहीं है, इसलिए केल्विन में ये difference है, doesn't matter. So higher is 35 and the lower is this. The lower temperature is 5 degrees centigrade. So I'll calculate the power input 40 into 30 divided by 278. ये आ रहा है 4.31. This power input is 4.31. Now he is asking the total power input. So the total power input will be equal to 16.6 plus 4.31. This is 20.9 watt is the right answer. Hope you understood, sir. अच्छा समझ में आया सर सभी मित्रगणों को? मेरे सज्जनों, वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सुबह है तो भी आ रहा है, शाम है तो भी आ रहा है। So you have respected these marathon sessions a lot. That means a lot to me. I'm so happy. क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्या बोला? क्लॉसियस इनइक्वालिटी लेंगे तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? 100% चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। ओके, राइट, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करो, रीड द क्वेश्चन सर, आराम से, टेंशन नहीं लेने का। A coal-fired power plant operates on Rankine cycle and has an efficiency of 30%. कहां लिखेंगे रे, कहां लिखेंगे? So एक मिनट सर। हाँ, the efficiency is equal to 30%. Okay. The heat input to the boiler is 500 megawatt. So the heat supplied. So heat input to the boiler is nothing but heat supply. It is 500 MW. MW का मतलब क्या है? मेगावाट। ठीक है। The pump input is negligibly small. Okay, ठीक है। If the condenser is cooled by sea water, oh God, generally water का specific heat क्या होता है सर? 4.18, लेकिन ये sea water है। थोड़ा देखो, तो ये तो जब मैं डेटा देख रहा था तो आई वाज शॉक्ड एक्चुअली। सी वाटर का इतना कम होता है क्या? मे बी ड्यू टू सॉल्ट्स द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिक्रीजेस, हो सकता है। समझ गए? ओके, व्हाट एवर द डेटा इज गिवन वो लीजिए सर। सो द स्पेसिफिक हीट इज गिवन एज 1 किलो जूल पर के जी पर केल्विन। ठीक है सर, हाँ, विच इज अवेलेबल एट 20 एंड द एग्जिट इज, देखो देखो एक सेकंड, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आवर power plant, I mean from our power plant the heat is rejected, in condenser heat is rejected. अरे कंडेंसर में जब फ्लूइड हीट रिजेक्ट कर रहा है, कौन लेना चाहिए? देयर शुड बी सम मीडियम टू absorb that heat. Who is absorbing the rejected heat of the working fluid of this power plant is rejecting. So जो वो रिजेक्ट कर रहा है, someone should absorb. Who is absorbing? Seawater is absorbing. That's why the seawater temperature is increasing as it is absorbing heat in the condenser from the working fluid. So its temperature is increasing from 20 degrees to 30 degrees. So what is the inlet temperature of seawater? 20 degrees centigrade. What is the exit temperature of seawater, sir? 30 degrees centigrade. ठीक है, no problem. The mass flow rate required in the अच्छा क्वेश्चन है सर, इधर देखो, मैं आपको अच्छा समझाऊंगा सर। Let us take a Rankine cycle. कुछ नहीं देता है तो विल टेक अ सिंपल साइकिल सर। ठीक है, ये वाला हीट रिजेक्ट हो गया सर, ये कहां से? 2 से लेकर 3 तक, इतना ये रिजेक्टेड हो गया। तो हु इज अब्सॉर्बिंग दैट हीट? दैट हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर। विच वाटर इज अब्सॉर्बिंग दैट? इट इज अ सी वाटर। तो सी वाटर इज एंटरिंग एट this temperature. After absorbing heat, it is leaving at this. So can I say whatever the heat is rejected, it should be equal to mass of seawater, specific heat of seawater into delta T, mc delta T. Whatever the heat is rejected, jitna heat reject hoga, that should be equal to mass of the seawater. Who is absorbing? Seawater is absorbing, mc delta T. Specific heat is given, delta T is given. He is asking the mass flow rate of seawater. So if
In order to calculate the mass flow rate of seawater, I should calculate heat rejection. विदाउट हीट रिजेक्शन क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा सर. कैसे करें सर? आप सोच के बताओ, सोच के बताओ सर, सोच के बताओ सर. बहुत ही सिंपल है सर. Efficiency of the plant is given. Mitragano, efficiency of the plant is given. So therefore, efficiency is equal to net work by heat supply. This can also be written as heat supply minus heat rejection by heat supply. Absolutely fine. Or this can also be written as, you separate this, Qs by Qs is 1 minus Qr by Qs. Absolutely fine. So therefore, Qr upon Qs is equal to 1 minus efficiency, Qr by 1 minus efficiency. So if you want heat rejection, it will be supply into 1 minus efficiency. So the heat rejection is, already you know the supply, it is 500 megawatt. It is 500 megawatt into 1 minus the efficiency is given as, how much is the efficiency, sir? 0.3. The efficiency is 0.3. So therefore it is 0.3. So you will get the heat rejection as, this is 0.7. 0.7 into 5 is 350. So 350 megawatt. Can I write 350 megawatt as 350 into 10 power 3 kilowatt? Mitragano, can I write? So एक बार heat rejection आ गया, तो who will stop you? Who will stop you? यहाँ पे put करना सर, देखो यहाँ पे put करना. So the heat rejection is 350 into 10 power 3, 350 into 10 power 3 mass flow rate of seawater, and the specific heat of seawater is 1 and delta T is 30 minus 10. Sir, why I converted from megawatt to kilowatt? किसी को कुछ आइडिया है? Because the specific heat is given in kilojoule per kg per Kelvin. अगर ये kilojoule में है, this should also be in kilo. अगर ये किलो में है तो ये किलो, अगर ये मेगावाट में है तो ये मेगावाट में होना जरूरी है. So from this you will calculate the mass flow rate of seawater. वो किस यूनिट में आएगा सर? kg per second. Why it is kg per second? एक बार चेक करते हैं सर, एक बार चेक करते हैं. What is the unit of this, sir? ये किलो मेगावाट से किलोवाट में कन्वर्ट किए. किलोवाट मींस किलोजूल पर सेकंड. ठीक है सर. दिस इज इक्वल टू, ये क्या है सर? मास फ्लो रेट आई डोंट नो. स्पेसिफिक हीट किलोजूल पर केजी पर केल्विन. Whenever it is a difference in temperature, it doesn't matter Kelvin or degree Celsius, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. केल्विन केल्विन गया और क्या है? केजी, ये केजी गया तो ये किलो केजी इधर आएगा. सो इट विल बी केजी पर सेकंड. सो एनीवन विथ मास फ्लो रेट ऑफ सी वाटर सर? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं. प्लीज, कितना आ रहा है सर ये? सब लोग थोड़ा डिसिप्लिन रहो बेटा. हम अपने कंट्री को, अपने फ्यूचर जनरेशन को एक सिग्नल भेजेंगे. हम कमिटेड है तो कमिटेड रहेंगे, सिंसियर है तो सिंसियर रहेंगे, डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन रहेंगे. एक सिग्नल सेंड करेंगे सर. सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई नहीं सर, सिर्फ पढ़ाई नहीं सर, हम कुछ अच्छे इंसान बन के बाहर निकलेंगे सर. दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड टेंपल ऑफ लर्निंग सर. ओके नाउ, कितना आ रहा है सर? नो 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 नो, 17,000 समथिंग इज रॉन्ग सर. सॉरी, ये 20 है सर. ये एग्जिट इनलेट इज 20. ये आ रहा है सर 350. तो 35,000 kg per second. The flow rate required is 35,000 kilogram per second. This is the right answer. Is it okay? मित्रगणों, is it correct? आ गया सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, ये करो. Make it fast. Let's not waste time. यस. मैं क्या किया? केजी पर सेकंड नहीं लिखा? हाँ, केजी पर सेकंड ही लिखा है ना रे. हाँ, ये पढ़ो. सो अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं तो दिखेगा सर आपको? अगर मैं, इफ आई मिनिमाइज दिस, कैन यू सी? जूम आउट करेंगे तो देखते हैं सर. कैन यू सी? दिख रहा है? और डू यू वांट मी टू एनलार्ज इट? जूम करूं? ना, जूम इन. दिस इज ओके ना? देखता हूं सर. हाँ, दिख रहा है. आई थिंक वी कैन सी. दिख रहा है ना सर? हाँ, क्योंकि ना आई गेट सम प्लेस टू वर्क ऑन. देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स. देखो,
वेपर कंप्रेशन बोलेंगे तो वो रेफ्रिजरेटर ही मानते हैं। इवन द हीट पंप ऑपरेट्स ऑन वेपर कंप्रेशन सिस्टम सर। ये वर्ड देखो एक बार, आप शब्द से खेल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सो इट इज नॉट रेफ्रिजरेटर, इट इज हीट पंप। हीट पंप, ध्यान से सुनो सर, इधर देखो, लेट मी ड्रॉ द साइकिल। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, throttling, and constant pressure heat absorption. At least you know this na, VC cycle, at least you know VC cycle। VC cycle क्या होता है? Isentropic compression, constant pressure heat rejection, throttling, constant pressure heat absorption। देखो सर, हाँ देखो करेक्ट था, इज इट क्लियर? अब हीट पंप है, यहां पे वर्क इनपुट हो रहा है सर, हियर वी हैव अ वर्क इनपुट। अगर ये हीट इनपुट है तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीट इनपुट, सॉरी हीट पंप? द पर्पस ऑफ हीट पंप इज टू सप्लाई हीट। तो हम क्या करते हैं, हीट पंप का पर्पस है टू सप्लाई हीट। इज इट ओके सर? मित्रों, इज दिस ओके? द पर्पस ऑफ हीट पंप इज टू सप्लाई हीट, टू सप्लाई हीट। तो अब बताओ व्हाट इज सीओपी सर? इट इज द डिजायर्ड इफेक्ट। व्हाट इज योर डिजायर? द डिजायर इज टू सप्लाई। अगर रेफ्रिजरेटर होता है तो लो टेम्परेचर इज द डिजायर। तो अगर रेफ्रिजरेटर होता है तो इट विल बी H1 minus H4 by work input, but it is a heat pump। तो heat pump के लिए क्या होगा? This much heat you are supplying to maintain higher temperature। Is it clear, my dear loving students? अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा सर। सो देयरफॉर व्हाट इज द सीओपी? डिजायर्ड इफेक्ट। इतना हीट सप्लाई कर रहा है, कहां से सप्लाई कर रहा है? 2 से लेकर 3 तक रिजेक्ट, हाइयर पे, हाइयर पे। ये हीट पंप है, हीट पंप का पर्पस है ये सप्लाई करना। तो कैन आई राइट दिस एज H2 minus H3 is the heat rejection, so by work input is H2 minus H1। क्या ये सही है? अगर वही, दिस इज फॉर हीट पंप। अगर वही रेफ्रिजरेटर होता है तो क्या लिखेंगे? अगर वही रेफ्रिजरेटर होता है तो यहां से हीट ले रहा है सर, यहां से ले रहा है, तो इट विल बी H1 minus H4। desired effect is taking heat from the storage space, 4 to 1, H1 as H4। अगर ये रेफ्रिजरेटर है तो वर्क इनपुट इज H2 minus H1। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? इफ दिस इज क्लियर आई विल प्रोसीड सर। ये हीट, इसीलिए ये क्वेश्चन ना बच्चे जनरली वीसी साइकिल का मतलब रेफ्रिजरेटर लेते हैं, तो केयरफुल रहो। तो अब हमें क्या करना है सर? समथिंग इज गिवन, एक बार देखो सर क्या क्या दिया, एक बार देखेंगे। द लोअर प्रेशर इज 1200 and sorry, the lower pressure is 280 and the upper is lower is 280 and the upper is 1200। तो ये वाला प्रेशर है, this pressure is 1200 किलो पास्कल and this pressure is 280 किलो पास्कल। कोई बात नहीं सर, हाँ जी ओके। अब देखो नाउ, मुझे बताइए क्या क्या दिया है सर? द एंथैल्पी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ऑफ द रेफ्रिजरेंट एट द एग्जिट ऑफ कंप्रेसर। देखो, this is entry to the compressor, this is exit of the compressor, so exit of the compressor is H2। so what is the value of H2 given sir? At the exit of compressor is 280। no, देखो और एक दी प्रॉपर्टीज, Hg at 280 किलो पास्कल। ये वाला 280 लो प्रेशर ये Hg है सर। ये देखो, ये सैचुरेटेड वेपर कर्व है, दिस सैचुरेटेड वेपर कर्व, ये Hg है सर। Hg 280 किलो पास्कल, लोअर Hg, कैन आई राइट इट एज H1? H1 देखो 280 किलो पास्कल पे Hg है, तो Hg है। H1 को मैं Hg at 280 लिखूंगा। Hg at 280 is how much sir? 249। तो H1 is given as 249.72 and HF is 117, 1200 केल्विन पे। देखो 1200 किलो पास, देखो HF at 1200, this is higher 1200, this is HF is nothing but 33। तो H3 is given as 117 point। तो ये है सर। अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? Now you tell me what is the value of COP of heat pump, मित्रगणों? तो H2, what is H2 sir? 280 and H3 is 117.77 by H2 is 280 and H1 is 249.72। प्लीज बताइए what is the value sir? No one is giving sir। मुझे थोड़ा दुख लग रहा है सर, आज कोई भी एक्टिव नहीं है ग्रुप में।
इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? हो गया सर? हो गया मित्रगणों? हो गया सर? यस। नेक्स्ट ये पढ़ो। सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब लास्ट लास्ट में थोड़ा टफ आएगा सर, डर जाएंगे बच्चे, भाग जाएंगे। जो टफ क्वेश्चंस आते हैं तो भाग जाते हैं। वी हैव टू फेस, दैट इज द ओनली थिंग। चलो पढ़ो सर, पढ़ो पढ़ो रे, पढ़ो पढ़ो रे, प्लीज पढ़िए। In an ideal air standard auto cycle, the working fluid may be assumed to be an ideal gas. ठीक है? And the compression ratio is 7. The compression, देखो first you draw auto cycle, एक बार auto cycle draw करो सर। This cycle is also known as constant volume cycle. Is the representation of auto cycle correct, sir? Is the representation of auto cycle correct? Isentropic, that is reversible adiabatic. All, what are the assumptions in auto cycle? All processes are internally reversible. Then working fluid is an ideal gas. It's not ideal gas. In fact, it is a perfect gas. There is a difference between perfect and ideal gas. है तो वो ideal gas के families. So the temperatures are when the temperatures are changing, the specific heat generally of the fluid change. But हम assume करते हैं कि even though the temperature is changing, the specific heat is assumed to be constant. Okay. These are all the assumptions I had given, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। तो क्या पूछा है सर, एक बार देखो। The compression at the beginning is the compression begins at 0.1 megapascal. So compression is starting at 1. What is the pressure, sir? 0.1 megapascal. 1 megapascal is 1000 kilopascal. 0.1 megapascal is multiply with 1000, so that will be equal to 100 kilopascal. And what is the temperature given, sir, before at the inlet to the compression? 35. 273 plus 35 is 308 Kelvin. ठीक है? The maximum temperature in the cycle is, this is the maximum temperature and it is equal to 1100. 273 add करना, it will be 1373 Kelvin. ठीक है sir? The properties are given. The net work output of the cycle कैसे करेंगे sir? How do I calculate the net? Simple सा question है sir. At least you know the efficiency of auto cycle 1 minus 1 by r power gamma minus 1. आज आपके क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन लीक कर रहा हूं सर। आज आपके मॉक टेस्ट में बेस्ट क्वेश्चन एक ऑटो साइकिल का है सर। बेस्ट मींस बेस्ट। ठीक है? देख के तो सिंपल लगेगा सर, सोचेंगे तो हाँ ये है। तो लेट्स कैलकुलेट द एफिशिएंसी। 1 minus 1 by r, what is r? 7. Gamma is 1.4 minus 1. Please give me the value of efficiency of auto cycle. कितना आ रहा है सर? सर आप लोग ना, मुझे दुख लगता है सर। Very simple, sir. Efficiency is equal to net work done by heat supply. So he is asking net work output of the cycle, but unit देखो kilojoule per kg. What does per kg means? It means for 1 kg. What does it mean? It means it is for 1 kg. Is it okay, sir? मित्रगणों, हाँ जी सर। Okay, अब proceed करेंगे। But somehow I have to find out heat supply. देखो देखो, heat supply is taking place from 2 to 3. It is a constant volume process. For a constant volume closed system process, heat supply is equal to change in internal energy, that is mcv delta t. What is delta c? 2 से लेकर 3 तक हो रहा है सर. So therefore it will be T3 minus T2. सर कंफ्यूज मत होना सर. रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल और ऑटो साइकिल में, इन IC engine air standard cycles, the working fluid is of fixed mass.
इसका मतलब वहां पे क्लोज्ड सिस्टम एनालिसिस होता है सर. सो ऑटो साइकिल डीजल साइकिल में डोंट अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बट इन ब्रेटन साइकिल एंड Rankine cycle you apply steady flow energy equation because the fluid is entering and leaving. यहाँ पे entry exit ऐसा कुछ नहीं हो रहा सर. All these I had explained very clearly in class. Okay, चलो कोई बात नहीं. तो mass is taken as 1. So 1. What is CV for air? 0.718. T3 minus T2. Oh my God. T3 is known but T2 is not known. How do I calculate T2? देखो, what is 1 to 2 process sir? 1 to 2 is reversible adiabatic. देखो एक बार. T2 by T, अरे यार कंप्रेशन रेशियो दिया ना, अरे व्हाई डू यू वरी. So for 1 to 2, can I apply T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1? Because 1 to 2 is reversible adiabatic and moreover it is an ideal gas. So I can use this equation. So for adiabatic, we have for reversible adiabatic ideal gas, three equations can be used. T1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma. T2 by T1 is equal to P2 by P1 gamma minus 1 gamma. And T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1. Is it okay, sir? Yes. अब देखते हैं sir. Now, can I write T2 as T1 into V1 by V2 power gamma minus 1? So T2 is equal to T1. What is T1, sir? It should be in Kelvin, sir. It is 308. What is V1 by V2? Volume before compression to the volume after compression. This we call it as compression ratio. ये वाला R है, sir. This term is your R. Volume before compression to the volume after compression, V1 by V2 is R. Already R is given as 7. 7 power gamma is 1.4 minus 1. From here, I can calculate the value of T2. कितना आ रहा है सर ये? Is it correct? Correct, sir? If this is correct, 670.8. Wonderful. Wonderful. So यहाँ heat supply यहाँ put करना sir, heat supply. Mass is taken as 1. Why the mass is taken as 1 per kg पूछा है. CV is 0.78. T3. T3 is already known, given the highest temperature is 1373 and T2 is 670.8. देखो एक बार, T2 is 670.8. So ME is 1, CV is 0.7, T3 is already given. We have calculated. So what is the, this will be per kg because mass is taken as 1. तो ये आ रहा है सर 1373 minus 670.8 into 0.718. So this is coming out to be 504.18 kilojoule per kg. So efficiency is equal to, देखो, efficiency is 0.5408. That is equal to net work by heat supply is 5, not 4.18. So ये आ रहा है into 0.5408. 272 is the right answer. Someone gave the answer, but you should be careful with units. है option में? Is it there in option? Yes. Clear? Clear, clear, clear. हो गया? We are not wasting time, sir. मस्त चल रहा है. हाँ. चलिए सर. Next. ये पढ़ो. हाँ, please coolly you answer to this question. Coolly. आराम से इसका आंसर दीजिए सर. आराम से सोच के आंसर दीजिए. You just think and give the answer. Which of the following are true? Come on, I'm waiting. Come on, come on. Let me see. देखते हैं कितने लोग आंसर दे सकते हैं. शैलेंद्र सिंह. शैलेंद्र. Which of the following concerning
एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज ट्रू। अरे कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहा है कोई भी आंसर नहीं दे रहे। आर यू देर? सब लोग है? जी। पुरुषोत्तम ने डी बोला। 2 3 4। ओ माय गॉड। ए, ऑल द अबव। यश। वो क्या रहा है? वो क्या रहा है सर आपको? वो क्या रहा है? मोहम्मद फैजी, चंदन, अजय और शैलेंद्र और कुछ आंसर। चलो, देखो देखो देखो, नो प्रॉब्लम। एमएसक्यू क्वेश्चंस थोड़ा डेंजर होते हैं सर। कैसे डेंजर होते हैं? आई टेल यू। देखो एक बार, फॉर मैं क्लास में कितना अच्छा बोला है, क्लास में कितना अच्छा पढ़ाया सर। देखो, वेन एवर द कंप्रेशन रेशियो इज फिक्स्ड, जब भी कंप्रेशन रेशियो फिक्स होता है ऑटो साइकिल इज एफिशिएंट। रीजन के साथ बताया मैं, तब ग्राफ से एक्सप्लेन करके बताया। बट हकीकत में इन एक्चुअल केसेस ऑटो साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है कम होता है सर। इसलिए एसआई इंजन आर लेस एफिशिएंट देन सीआई इंजन, बिकॉज फॉर सीआई इंजन एक्चुअल कंप्रेशन रेशियोस आर 16 to 20, फॉर एसआई इंजन इट्स अराउंड 6 to 10 or 6 to 12. So he is not asking actual, he is asking for a given compression ratio. देखो एक बार, for a given compression ratio, given का मतलब fixed, for a given compression ratio and inlet conditions, Otto cycle has higher efficiency. Yes, absolutely. Otto cycle has higher efficiency. Yes, absolutely correct. ये सही है. For a given maximum cycle pressure, for a maximum temperature, you know, diesel cycle is efficient. Yes, diesel cycle has higher efficiency. ये भी बताया था सर मैं. If you want, I can do it. But जरूरी नहीं. So for a given maximum pressure and temperature, diesel cycle is efficient. ये भी बताया था. Reason के साथ. The thermal efficiency of Otto cycle increases with increase in compression ratio. Yes, we have drawn the graph also, sir. We have drawn the graph. अगर compression ratio बढ़ रहा है तो efficiency is also increasing. इसका physical explanation क्या दिया था? Higher the compression, larger is the scope for expansion, more is the output for a given input. That's why the efficiency increases. So always remember, जब compression ratio बढ़ता है तो efficiency भी बढ़ेगा सर. So therefore, this is also correct. For a given compression ratio inlet condition, the thermal efficiency of diesel cycle increases with cutoff ratio. अरे यार, जब कट ऑफ रेशियो बढ़ाएंगे क्या एफिशिएंसी डीजल साइकिल का बढ़ेगा? घटेगा सर. द ग्राफ इज, मित्रों, इफ यू सी एफिशिएंसी वर्सेस कट ऑफ रेशियो, if I increase the cutoff ratio, the efficiency of a diesel cycle will increase, decrease. बोला था सर. मैं सॉम और फ्लूइड के बाकी क्वेश्चंस का इंतजार कर रहा हूँ. लॉर्ड ऑफ थैंक्स. Hello, sir. Please, I am weak in industrial, but when I watch your and it gives more confidence. Please, one more session. मैं कितने लूंगा सर आप? बिकॉज जो मेरा कमिटमेंट है इस 2026 के लिए होगा सर. अब नाउ माई फोकस विल बी ऑन 2027. सीरियसली, अभी 2 सेशंस या 3 सेशन आपके लिए लेके मैं 26 के लिए क्लोज करूंगा सर. बिकॉज आई टू नीड सम गैप ना, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग द न्यू साइकिल. तो आई टू नीड सम 3 to 4 days रेस्ट. समझ गए ना? सो जो ठीक है, जितना पॉसिबल है मैं कर रहा हूं सर. ठीक है, लीव इट सर. सो फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल से इंक्रीजेस विद कट ऑफ रेशियो. नो, कट ऑफ रेशियो बढ़ने से एफिशिएंसी घटता है सर. गिवन द रीजन ऑल्सो. क्या रीजन दिया था? Heat rejection is occurring at constant volume. Heat supply is occurring at constant pressure. The slope of constant volume is greater than the slope of constant pressure on TS diagram. ये सब heat rejection is occurring at a faster rate than the heat supply. ये सब बताया था. So याद रखना सर. I am expecting one question. इसी में ही एक नया modified question. Consider the following statements with respect to diesel cycle. हाँ, क्या बोलता है? इधर देखो.
देखो मैं एक एक सवाल पूछूंगा सर. सो फोर्थ इज रॉन्ग. सो 1 2 3. आई थिंक टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर. ये अच्छा दिए सर. करूंगा कर. अच्छा. करें. करते हैं सर. फिर क्या करते हैं. देखो एक सेकंड देखो. जान ले रहे सर आप लोग मेरा. एक सेकंड. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन सर. एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन. देखो कोई भी सब्जेक्ट लिए सर हम इतना प्यार से किए सर. You might have seen marathon sessions somewhere also, but our marathon sessions and जितना आप इसको अप्रिशिएट किया ना, आई एम सो थैंकफुल. यही मेरा मोटिवेशन है सर. So consider the following statement with respect to diesel cycle. For a diesel cycle, the efficiency increase. Diesel की बात कर रहा है. So I'm talking about a diesel cycle. For a diesel cycle, efficiency increases with A, increasing compression ratio, B, decreasing compression ratio, C, increasing cutoff ratio, D, decreasing cutoff ratio. It is MSQ sir. What is your answer? ये वाला इस बार आ रहा है सर. इस बार का क्वेश्चन है सर. ये आंसर दीजिए. आंसर. आंसर दीजिए. आंसर दीजिए. डा 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 डा. अरे डा 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 डा. A and D. देखो, with increase in efficiency. So when can efficiency increase? Increasing compression ratio, correct. Decreasing compression ratio, गलत. Increasing cutoff ratio, गलत. Decreasing cutoff ratio, yes. So A and D are right. Very good. इस बार का क्वेश्चन लीक कर दिया सर. हम्म. ठीक है. चलिए ये वाला लीजिए. कम ऑन सर. कम ऑन कम ऑन. Consider a steam power plant operating on ideal reheat cycle. Acha, reheat cycle. The work input to the pump is 20. अच्छा क्वेश्चन है सर. प्यारा सा क्वेश्चन है सर. वाह. Read it. Lovely question. I'm also reading, sir. Consider a steam power plant operating on ideal reheat Rankine cycle. The pump input is 20. The output from there are reheat का मतलब दो turbines होते हैं. High pressure turbine, low pressure turbine. The work output from high pressure turbine is 750 and the work output from low pressure turbine is 1500. The efficiency of the cycle is 50. The enthalpy of saturated liquid at the condenser pressure is 200. What is the quality of the steam at the exit of low pressure turbine? क्या मस्त क्वेश्चन है सर. वाह. कैसे करेंगे मैं सोच रहा हूँ सर. आई एम थिंकिंग. यहां से नेटवर्क निकल के आएगा. एफिशिएंसी दिया तो हीट सप्लाई आएगा. हीट सप्लाई आएगा. आ गया सर क्वेश्चन. हीट रिड्यूशन आएगा. हाँ आ गया सर. सोचो. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस. आई एम इन क्लास प्लीज. आई एम इन क्लास. आई विल कॉल यू लेटर. ओके प्लीज. ठीक है. ये वाला सवाल रहे. क्या सवाल है सर ये. व्हाट अ क्वेश्चन. देखते हैं सर. हाँ. लेट्स कैलकुलेट. देखो. लेट्स कैलकुलेट द नेटवर्क. नेटवर्क इज इक्वल टू टोटल टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क. लेकिन यहां पे देर आर टू टर्बाइन्स. वन इज हाई प्रेशर टर्बाइन, वन इज लो प्रेशर टर्बाइन. दिस इज द टोटल टर्बाइन वर्क minus pump work. That will give me network. So what is the network, sir? Turbine 1 is 750 and turbine 2 is 1500 and the pump work is 20. So please give me the value of network.
Anyone? What is the network, sir? Okay, 2230. Okay. Once this is known, must question है sir ये. This is expected. This is expected. This is the network and that is kilojoule per kg. सब लोग जिंदा है सर एक बार बोलो. जिंदा है कोई बात नहीं. यस यस यस. नाउ तो ये क्या कर रहा है सर आप मतलब व्हाट आर वी डूइंग एक बार लेट मी ड्रॉ द साइकिल. सो एक सेकंड देखो. मान लो दिस इज एक्सपेंशन इन द फर्स्ट टर्बाइन, then reheating, expansion in the second turbine, then condenser. Is this cycle correct, sir? Is this cycle correct, sir? क्या ये साइकिल सही है सर? इट्स अ रीहीट साइकिल ना? yes, it's a reheat cycle. Okay, no problem at all. चलो, no problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a reheat cycle. ठीक है. No problem at all. Great. Great, sir ji. Now, this turbine work is given as 750 high pressure. This is given as 150, sorry, 1500. And this is given as 20. Okay, now देखो, he is asking the dryness fraction. My dear students, एक second please. एक second. एक second please. He is asking the dryness fraction. देखो, कहाँ का ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा है सर? ही इज आस्किंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द टर्बाइन एग्जिट. तो मैं क्या सोच रहा हूं सर, ही इज आस्किंग दिस वैल्यू. क्वेश्चन समझ में आया सर सभी को? ऑल डियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? देखो इतना प्यारा सा, बोलो एक बार, सब लोग बोले इसको, इस क्वेश्चन को. देखो आई विल टेल यू व्हाट आई डू इज वी हैव कैलकुलेटेड द नेटवर्क एंड ये थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हूं सर, इसको कुछ करेंगे. So efficiency is equal to net work by heat supply, or this can also be written as mitrogano. So efficiency can be written as net work is supply minus rejection by supply. So efficiency is equal to 1 minus QR by QS. So what is the efficiency given, sir? I think somewhere the efficiency is given. कितना दिया सर? efficiency दिया है 50%. इधर देखो 50%, 50%, 50%, 50%. So efficiency is 50%. 0.5 is equal to 1 minus rejection by supply. Oh God, oh God. So efficiency is equal to net work by heat supply. So efficiency is 0.5. Net work is already calculated 2230 by heat supply. So heat supply will be equal to kitna aega sir? 4460 kilojoule per kg from this. Once it is known, rejection I don't know, and the supply is 4460. So as the efficiency is 50%, supply rejection will be in the ratio of half. So kitna aa raha hai sir rejection? From here, if I calculate the rejection, I think you are getting 2230 kilojoule per kg. Hope this is clear. Now the question that comes to our mind is, sir, why have you calculated the heat rejection? Anyone? देखो देखो, what is already you have calculated the heat rejection. Go to the basic cycle. Go to the basic cycle. The heat is rejected in the condenser. How much heat is rejected, sir? The heat rejection is 2230 kilojoule per kg. ये heat rejection है. So can I write heat rejection if I apply steady flow energy equation? The rejection is taking place from 4 to 5. So can I write rejection is, देखो, actually it will be H5 minus H4, but minus लिएगी तो minus of heat is heat rejection. So heat rejection is H4 minus H5. So therefore heat rejection will be equal to, so here it is the heat rejection H4 minus H5. यहाँ लिख रहा हूँ sir. So the heat rejection is H4 minus H5. Correct, sir. So how much is the heat rejection? It is 2230 is H4 minus H5. H4 minus H5. ठीक है, sir.
What is H4? I do not know. What is H5? Already H5 is given. Condenser pressure pe HF. Condenser pressure pe HF. H5 is HF. This H5 is HF at condenser pressure. So दिया है सर. एक बार देखो क्वेश्चन देखो एक बार क्वेश्चन देखो. The enthalpy of saturated liquid and saturated vapor at condenser pressure is, this is HF, enthalpy of saturated liquid, and saturated vapor, this is Hg. This Hg is given, यहाँ का एक सेकंड, this Hg is given as कितना दिया सर 2600 and this HF is given as 200. So ये समझ में नहीं आ रहा सर आपको, प्लीज देखो, in the question it is given 2200 एक दिया है 2600. यहाँ का enthalpy is given as 2600 and here the enthalpy is given as 200. HF is given as saturated liquid at condenser pressure is 200. Saturated vapor is 2600. So what is H4 minus H5? Already H5 is given as 200. So therefore H4 will be equal to, ये add कर लेना इधर, it will be 2430 kilojoule per kg. Once the enthalpy here is known, can't I calculate the dryness fraction sir, because it is in the wet region. तो मैं थोड़ा color change करता हूं sir. It is in the wet region. So H4 is equal to HF plus X into Hg minus HF. ठीक है sir. What is H4? 2430 is equal to HF. Already HF is 200 plus X into Hg minus HF. Hg is 2600 and HF is 200. क्या क्लास क्वेश्चन है सर ये? सर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा, मैं बंद कर दूंगा सर दुकान को. Is the question clear sir? Excellent sir, excellent. Why 0.2 is taken on them? जरूरी नहीं है सर, अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं. यू कैन टेक इवन लाइक दिस साइकिल, उसके लिए देखो, यू कैन टेक इवन लाइक दिस ऑल्सो, और यू कैन टेक, देखो, यू कैन टेक लाइक दिस ऑल्सो. समझ में आ रहा है सर? इसका नहीं दिया है, कोई बात नहीं. यू कैन टेक इन सुपरियर रीजन ऑल्सो. टू समझ में आ रहा है सर? यस, यू हैव आस्क्ड द राइट क्वेश्चन सर. आई एम सो हैप्पी. क्वेश्चन करो सर आप. यू शुड क्वेश्चन योर टीचर. समझ में आया? वाह. सो इट्स नॉट गिवन. जनरली लेते हैं सैचुरेटेड पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. सो हाउ डज इट मैटर? अच्छा लगा सर क्वेश्चन? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अच्छा लगा? नहीं लगा रे, नहीं लगा रे. क्या ये क्वेश्चन अच्छा लगा आपको? तो देखो क्या बोला है, एक बार रिविजिट करेंगे सर. लेट्स रिविजिट द क्वेश्चन. देखो देखो एक सेकंड. हायर टर्बाइन वर्क, लोअर टर्बाइन वर्क, हाई प्रेशर टर्बाइन, लो प्रेशर टर्बाइन, पंप वर्क इज गिवन. यहां से नेटवर्क निकालेंगे. नेटवर्क एफिशिएंसी दिया है, एफिशिएंसी इज नेटवर्क बाय हीट सप्लाई, तो वहां से हीट सप्लाई निकालेंगे. हीट सप्लाई निकालेंगे, तो सप्लाई माइनस रिजेक्शन इज नेटवर्क, तो और एफिशिएंसी से रिजेक्शन निकालेंगे. रिजेक्शन इज नथिंग बट, समझ में आया सर? अच्छा क्वेश्चन था सर. सर नो वन इज हैप्पी टुडे, तो क्या करे सर? कोई खुश नहीं है. खुशों की नहीं, खुशियां नी बंदा खुशों की नहीं. हमारे मोंडल साहब है. हाँ हमारे है वो. मोंडल साहब हमारे हैं, बिल्कुल हमारे हैं वो. ठीक है. जनरली एलपीटी इज मोर, यस जनरली. ठीक है. चलो आगे बढ़े सर. ये क्वेश्चन अच्छा लगा? सो ये क्वेश्चन अच्छा लगा आपको? अरे यार, क्या ये क्वेश्चन अच्छा लगा? डिया डिया, डिया डिया. सर आप लोग खुश नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा सर. अब बाय बाय, बंद करा, दुकान बंद करा. दिस पीपल आर नॉट हैप्पी. आई एम लिविंग. चलो बाय. बाय सर. अब जाइए, प्लीज जाइए सर.
I'm sorry. अब हम नो 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 नहीं पढ़ाएंगे। चलो जाओ सर, जाओ। हम तो जा रहे रे, हम तो जा रहे रे, अब जा रहे रे, अब जा रहे रे, हम तो जा रहे रे, बाय बाय बोलेंगे आपको। आई एम गोइंग रे, आई एम गोइंग रे, बाय बाय बोलेंगे। आई एम गोइंग सर। अरे ये क्या हुआ? सडनली ये क्या हुआ? सडनली ये एंट्री क्या हुआ? मजा आया? चलो, चलो नेक्स्ट। ये लीजिए। हाँ, सब लोग जिंदा है। क्या हो रहा? कोई आंसर भी नहीं दे रहा सर। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। हम लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं रे, रोते हुए नहीं बैठते हैं। पता नहीं सडनली ये चेंज ऐसा कैसा हुआ। टेक दिस क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ठीक था ना सर? चलो चलो चलो, देखो। In a steam power plant based on ideal Rankine cycle, the turbine develops. अच्छा क्वेश्चन है सर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर। So this is also a good question. This is also a good question, sir. Please. The steam power plant based on ideal Rankine cycle, the turbine develops a power of 12 megawatt. Assuming saturated liquid water pump, अच्छा क्वेश्चन है सर, of density, what percentage of turbine output is required for the condenser pump? The enthalpy and entropy of saturated vapor and at condenser pressure are given. The other relevant properties are also given. Okay, okay. Sir, question को समझो सर. Please understand the question, sir. Please understand the question, sir. Please understand the question. It's a must question है sir. Simple and ideal में क्या डिफरेंस है सर? रैंकिल साइकिल ऑन टीएस डायग्राम कौन है ये? मोहम्मद फहीम। Ideal means no irreversibilities. The expansion and the pumping is assumed to be क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक। पॉइंट नंबर वन, ध्यान से सुनो सर। आइडियल का मतलब एक्सपेंशन इन टर्बाइन, दी पंपिंग जो हो रहा है पंप में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक मानते हैं, मतलब नो इरिवर्सिबिलिटीज आर इन्वॉल्व, वो क्या है सर? आइडियल। सिंपल का मतलब नो मॉडिफिकेशंस लाइक रीहीट, रीजनरेशन, ये सब मॉडिफिकेशंस है सर, वो सिंपल में नहीं आते। सिंपल मींस नॉर्मल साइकिल्स, नो एडिशनल अटैचमेंट्स लाइक रीहीटर और रीजनरेटर, ये सब नहीं रहते सर। समझ में आया सर सभी को? इज इट क्लियर? क्लियर सर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, चलिए। हाँ, जादूगर देखो, मस्त क्वेश्चन है सर, मस्त क्वेश्चन है। यू मे बी थिंकिंग सर ऐसा क्यों दे रहे, बिकॉज एक हम आई एम गिविंग क्वेश्चंस इन सच ए वे दैट सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें जुड़ जाए सर। ओके, चलो देखो। द turbine is developing 12 megawatt. Sometimes some data is superfluous. मतलब कुछ क्वेश्चंस में कुछ डेटा अननेसेसरी होता है सर, अननेसेसरी आपको दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है सर? ओके। द सैचुरेटेड द पंप इनलेट डेंसिटी दिया है सर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टर्बाइन आउटपुट रिक्वायर्ड फॉर द कंडेंसर, मतलब
पंप के लिए टर्बाइन का कितना परसेंटेज ऑफ वर्क जा रहा है सर? आई रिपीट सर, फॉर पंपिंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ टर्बाइन वर्क इज गोइंग फॉर पंपिंग, ये पूछा है सर। ठीक है सर जी, इधर देखो मित्रगणों, इधर देखो, पहले हम साइकिल को ड्रॉ करेंगे सर। फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द साइकिल, फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द साइकिल, एक सेकंड, देखो देखो देखो, फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द साइकिल। आप लोगों को डाउट आ रहा होगा ये, सर ऐसा क्यों दिए सर? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं, डोंट वरी, मैं हूं ना। ठीक है सर जी, देखो, हाँ देखिए सर जी, एक सेकंड, मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि इट डेवलप्स अज्यूमिंग द लिक्विड वाटर एट पंप इनलेट डेंसिटी। सो कहां का डेंसिटी दिया सर? देखो, लिक्विड वाटर, दिस इज द लिक्विड वाटर एट द पंप इनलेट, ये पंप का इनलेट है सर, पंप का इनलेट ये है, पंप का आउटलेट है। सो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट पंप इनलेट इज गिवन 993 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है सर जी, हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम, मतलब ये डेवलप कर रहा है, तो ये कुछ वर्क डेवलप कर रहा है, तो आउट ऑफ दिस टोटल वर्क कितना वर्क ये पंप कंज्यूम कर रहा है सर? हाउ मच वर्क दिस इज कंज्यूमिंग। ठीक है सर, तो आप यू मे बी वंडरिंग, देखो एक बार, देखो मैं ऐसे क्यों दिया सर, एक बार देखो, दिस इज दी कंडेंसर प्रेशर सर, ये कंडेंसर का है, और ये है बॉयलर का है सर, दिस द बॉयलर, ओके नो प्रॉब्लम। देखो, what percentage of turbine output is required for the condenser? The enthalpy and entropy of saturated vapor, देखो, the enthalpy and entropy of saturated vapor at condenser pressure, so enthalpy and entropy of saturated vapor बोला है, so he is asking about this saturated vapor is this, मित्रों, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर सर, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर, यहां का एंथैल्पी, यहां का एंट्रोपी दे रखा है सर, where the enthalpy entropy are given, so at the condenser pressure the saturated vapor का दिया सर। देखो एक बार क्वेश्चन को, the enthalpy, अरे, the enthalpy and entropy of saturated vapor at condenser pressure, कंडेंसर प्रेशर पे सैचुरेटेड वेपर का एंथैल्पी एंट्रोपी दिया है सर, कितना दिया है सर? 2573, और ये दिया है 8.27, आई रिपीट सर, 2573 8.27 दिया है सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक्सलेंट। और क्या बोला है सर? नेक्स्ट, द अदर रिलेवेंट प्रॉपर्टीज आर गिवन, देखो एक बार, एक सेकंड देखना सर, पंप इनलेट, विच वन इज पंप इनलेट सर? देखो, पंप इनलेट के पैरामीटर्स है, दिस इज द पंप इनलेट, अरे यार बहुत डिस्टर्ब हो रहा, पंप इनलेट यहां का, at pump inlet, the pressure is 0.073 bar. देखो, पंप इनलेट, the enthalpy is H3, पंप इनलेट is 167, ये पंप इनलेट है, S3 is 0.57, ये सारे पंप इनलेट पे है। और बॉयलर एग्जिट, विच वन इज बॉयलर एग्जिट सर? देखो, वी आर सप्लाइंग हीट फ्रॉम 4 to 1, so H1 is boiler exit, so what is the enthalpy boiler exit पे प्रेशर क्या है सर? The pressure at the boiler exit is 440 bar and the enthalpy at the boiler exit is 3213 and the entropy is मित्रों is 6.77। अब समझ में आया सर? आपके टीचर ने ये 0.2 को अंदर क्यों डाला सर? क्योंकि यहां का एंट्रोपी, सैचुरेटेड वेपर एंट्रोपी इज 8.27, सो 1 to 2 इज आइडियल है तो आइसेंट्रोपिक, तो एट 1 द एंट्रोपी इज 6.67, तो अगर 1 का एंट्रोपी 6.77 है, 2 का भी 6.77 होना है, बिकॉज 1 to 2 इज आइडियल, इज रिवर्सिबल एडिमेटिक, तो ये एंट्रोपी से में, तो इट इज 6.77, सो एज 8.27 इज ग्रेटर देन 6.2, इसलिए मैं इस पॉइंट को अंदर लिया सर। शायद आपको समझ में आया होगा। इज द पॉइंट क्लियर सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सम स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है सर, इस मुझे 100% उम्मीद है सर, आप लोग क्रैक करेंगे सर, मतलब एफर्ट्स काम में आएंगे। ठीक है सर जी, तो आगे बढ़े। हाँ देखो सर, दिस इज द सिचुएशन, मैं क्या करूं सर? पहले एक काम करो,
You calculate the pump work, you calculate the turbine work. What is he asking? Out of the total turbine work, what fraction is taken by pump? He is asking in percentage. दोबारा बता रहा हूं सर, आप टर्बाइन वर्क कैलकुलेट कीजिए, आप पंप वर्क कैलकुलेट कीजिए, आउट ऑफ द टोटल टर्बाइन वर्क कितना पंप कंज्यूम कर रहा है. तो ये तो आइडियल है. आइडियल का मतलब रिवर्सिबल है. अगर रिवर्सिबल है तो आई कैन अप्लाई VDP, V into DP, pump work, because yeah, whenever it is ideal, ideal तो reversible होगा. So therefore I can apply this. V का मतलब देखो, specific volume is volume by mass. Can I write specific volume as 1 by mass by volume? Can I write specific? Yes. तो specific volume is what is mass by volume density. तो यहां पे हम पंप वर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं सर, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 1 बाई डेंसिटी इंटू डीपी. बिल्कुल लिख सकते हैं सर. हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी. सो देयरफॉर pump work is equal to 1 by what is the density sir, 993, and change in pressure. What is the change in pressure sir? What is the change in pressure sir? अब देखो, what is the change in pressure? The change in pressure is, ये देखो, ये 0.073 है, ये 40 है, ये बार में है. तो 40 minus 0.073 मित्रों, 40 minus 0.073, 40 minus 0.073, but that is wrong because these are in bar. I want in kilopascal. 1 bar is 100 kilopascal. So yahan se I can easily calculate the pump work. How much is the pump work, sir? कौन है रे? अभी आया मृगराज. गुड मॉर्निंग सर. डिसिप्लिन नहीं है तो मेरे क्लास को मत आना सर. ये मत बोलना. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सुनो. Yesterday on an important work I traveled sir. I traveled around 171 340 kilometers and I reached home at 11 o'clock. 11 को आने के बाद पूरे क्वेश्चंस सेटअप करके उसका पीडीएफ बना के पूरा बना के सोने के लिए मुझे 1:30 हुआ सर. फिर सुबह रेडी 8 o'clock रेडी क्लास पे है. दैट इज नोन एज कमिटमेंट. अगर जिंदगी में वो डिसिप्लिन कमिटमेंट नहीं है तो प्लीज फॉरगेट. अगर if you want something big or great in life, you should be consistent, you should be disciplined, and that discipline is very important sir. Discipline on all fronts. अगर वो नहीं है तो मुश्किल है सर, मैं बता रहा हूं. प्लीज, very important. So if you want to be successful and if you want to do something great, there has to be consistency and discipline in life. आप लोग देखो, मोटिवेशन से डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर. मोटिवेशन लास्ट ओनली फॉर सम टाइम बट डिसिप्लिन इज एवरलास्टिंग. अगर कंसिस्टेंटली आपका डिसिप्लिन मेंटेन होता है तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे आप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग सोचेंगे डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्यों चिल्ला रहा है सर? बिकॉज आई नो दैट वी ग्रू इन डिसिप्लिन सर. सॉरी, कोई बात नहीं. हाँ देखो, पंप वर्क कितना आ रहा है सर? पंप वर्क 40 minus 0.073. Think you are getting the pump work as 4.02 kilojoule per kg. Is the pump work clear, sir? Is the pump work clear, sir? Anyone got this pump work? Excellent, sir. Ketan has given the pump work correctly. Yes. Turbine work calculate करेंगे. देखो सर जी, how do I calculate the turbine work? मित्रगणों, how do I calculate the turbine work? देखो देखो, turbine work is H1 minus H2. H1 minus H2. Already H1 is given. There is no problem with H1. But the problem is with H2 because it is in wet region. So can we write H2 as HF plus X into Hg minus HF sir? क्या हम लिख सकते हैं? H2 is equal to HF plus X into Hg minus HF. एक बार देखो, H2 is equal to HF. तो H2 is HF. HF is nothing but ये वाला एंथैल्पी. देखो, HF is nothing but H3, 167 plus X into Hg. तो 2 पे G point is this. यहाँ का एंथैल्पी is already given 2573 minus HF is 167. Excellent sir. यहां तक किसी को कोई टेंशन की बात नहीं. The unfortunate thing is X is unknown. How do I calculate X sir? X, anyone? X देखो, S1 is equal to S2. S1 is S2 because it is ideal है तो S1 S2. S1 is already 6.77. So S2 is 6.77. So can I write S2 as it is in the wet region?
क्या हम इसको ऐसे लिख सकते सर? बिल्कुल लिख सकते सर। तो S2 is 6.77 SF। व्हाट इज SF सर? व्हाट इज SF? ये SF है। SF यहाँ का एंथैल्पी, SF यहाँ का एंथैल्पी 0.57। सो दिस इज 0.57 प्लस x into SG minus SF। SG देखो, SG is 8.27, 8.27 minus SF is 0.57। Can anyone give the dryness fraction at the turbine exit? Sir, no one is giving answer. Mohammad Faizi alone is sincere. Mohammad Faizi alone is sincere. मुझे अच्छा लग रहा है सर। तो यहां से x निकल के आएगा। आई वांट सम मोर वैल्यू सर। शैलेंद्र दिया है 0.805। तो यहां पुट करना सर, H2 is equal to 167 plus x is 0.805 into 2573 minus 167। तो कितना आ रहा है सर ये? Yes. Once H2 is known, what is the turbine work, sir? The turbine work is, Mitragano, the turbine work is, turbine is H1 minus H2. H1 is already given 3213. H1 is already given. H2. What is H2? 2103.83. So the turbine work is 1109.17 kilojoule per kg. ठीक है. So therefore, एक बार turbine work आ गया, pump work. Already pump work is known. Pump work is 4.02. Therefore, मित्रों, so he is asking, so out of the total turbine work, how much is consumed by the pump? So the pump work is 4.02 and the turbine work is 1109.17. So if you want in percentage, multiply with 100. ये आ रहा है 0.3624 percentage. Anyone got this? Anyone got this? Anyone got this? नहीं, नहीं आया रे, नहीं आया रे, नहीं आया रे, नहीं आया रे। गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था सर। वॉज इट अ गुड क्वेश्चन? सही चल रहा है सर सब कुछ? इज एवरीथिंग फाइन? क्लियर? क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। So is everything going on fine? अरे ऑप्शंस विप्शंस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ड्यूरिंग अ स्टेडी स्टेट एयर कंडीशनिंग प्रोसेस, एयर एंटर्स अ हीटिंग सेक्शन। मान लो ये हीटिंग सेक्शन है सर, ये हीटर है। द एयर इज एंटरिंग एट 1 and leaving at 2. The air is entering and leaving at 2. So the inlet section temperature is, and the relative humidity is 40%. ठीक है सर? हाँ, and leaves at 30 degree. Assuming the heating process takes place at मतलब constant pressure है, the relative humidity at the exit is, कैसे करेंगे सर? The saturated pressure of vapor at 15 degree, ये 15 है, तो यहाँ का the saturated pressure of vapor at 15 degrees is inlet. So how much is that, sir? 1.7057. And the saturated vapor pressure at exit, मतलब 30 degrees पे, at 30 degrees, the saturated pressure at 30 degree is, मित्रों, at 30 degree is 4.2469, 4.2469. And what is the total pressure given, sir? The total pressure is given as 100 kilopascal. So this is 100 kilopascal.
The total pressure is, पूछा क्या है सर? What is asked in the question? He is asking relative humidity at the exit. अच्छा, phi 2 is how much already I have written. How do I attack? इसको मैं अटैक कैसे करूं मित्रों? मैं कैसे अटैक करूं सर? देखो देखो, एक सेकंड। देखो एक सेकंड। If I show you on psychrometric chart, either it is omega or PV, and here it is dry bulb temperature. So the air is entering at state 1, which is at 15 degrees centigrade, and please note down that it is simply heating. What is the process, sir? ये process क्या है सर, आप बताइए? According to me, it is a sensible heating process. मेरे अनुसार ये sensible heating process है सर. Agreed? Do you agree with this? Yes sir. क्यों? क्योंकि air is entering at 15 degrees, it is absorbing heat and going. मतलब neither the moisture is added nor removed. मतलब यहां पे ओमेगा कांस्टेंट है सर मेरे मित्रों। ओमेगा कांस्टेंट है या नहीं? अरे यार देखो, ये हीटर है, एयर आ रहा है, हीट ले रहा है और जा रहा है। क्या ओमेगा में कोई बदलाव है सर? विल देयर बी, इज देयर एनी चेंज इन ओमेगा? नो सर, मॉइस्चर इज नाइदर एडेड नॉट रिमूव्ड, तो ओमेगा इज कांस्टेंट। तो ओमेगा कांस्टेंट मींस इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन सर, and moreover it is heating. So this is point 0.2, this is our 30 degree centigrade, and this is our 15 degree centigrade. So you tell me, so omega is equal to 0.622 PV by P total minus PV. Already P total is constant, and when omega is constant, यहाँ पे इस line पे omega is constant. Omega, already PT is constant. When omega is constant, it means PV is also constant. Whether it is first PV or second PV, it will be the same. क्योंकि इस line पे PV और omega. So can I write PV1 is equal to PV2? Absolutely fine, sir. If you, because P omega is not changing means PV is not changing, because the total atmospheric pressure is constant. Is it clear? It's a sensible heating process, sir. You are right. It's a sensible heating process. Am I right, sir? Mitragano. देखो, therefore PV is constant. तो एक काम करते हैं सर, if you want phi 2, it will be PV2 by PVS2. Already PVS2 is given. If you can find out PV2, the problem is solved. But you know that PV2 is also equal to PV1. So if you catch PV1, the problem is solved. So how can I catch PV1? Phi 1 is equal to PV1 by PVS1, because phi is PV by PVS. Phi is 0.4 is equal to PV1, I do not know, by PVS1 is 1.7057. And please note on that this is in kilopascal. If this is in kilopascal, this will also be in kilopascal. So can you give me the value of PV1? चलो ये पुट करना सर यहाँ पे. So phi 2 is equal to PV2 0.68228 by PVS2, and PVS2 is 4.2469. Both are in consistent units. So that is kilopascal by 4.2469. You are getting the relative humidity as 0.1606, or it will be, if you want in percentage, it is 16.06 percentage. Is it correct, sir? Anyone got this answer, sir? किसी को आया सर ये आंसर? मित्रगणों, 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 16.6. Absolutely fine. Okay, sir. सब लोग एक बार बोलो. Okay, sir. Okay, sir. बोलो. नहीं चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे. चलो
हो गया सर। बाल गंगाधर, हाँ एक था यार, अपना भूल गए। वाह। चल नेक्स्ट। ये क्या है सर? वाह वाह, वाह वाह। तो इसको हम थोड़ा ऐसा करेंगे। ओ, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान। आएगा सर, काहे को टेंशन ले रहे रे? जितना उम्मीद कर रहे उससे ज्यादा दूंगा बोला ना। सब आएंगे, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ब्रिटेन साइकिल, वीसी साइकिल, साइक्रोमेट्री। आप देखते जाना। रीड दिस क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट यू टू रीड द क्वेश्चन। देखो एक बार। A cyclic steam power, sorry, steam power plant. Can you see सर, छोटा दिख रहा है आपको, या फिर इसको जूम करूं? जूम करेंगे तो क्या होगा, जूम करेंगे तो क्या होगा? दिख रहा है सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सर। हाँ। A cyclic steam power plant is to be designed for a steam temperature at turbine inlet 400, 18 bar, and exhaust pressure is given. After isentropic expansion of steam in the turbine, the moisture content at the turbine exhaust is not to exceed 15%. मतलब moisture 15% से ज्यादा नहीं होना है। मतलब the dryness fraction is 15% का मतलब moisture है, तो ड्राई कितना है 85%, तो 85% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। The properties of saturated steam are given. So what is the mean temperature of heat addition? Please mark this question as very important question. तो इसका इंतजार बहुत दिनों से था सर, तो इसका इंतजार बहुत दिनों से था। अब रियलाइज करेंगे सर, दिस इज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। So let me draw the cycle first. Let me draw the cycle. Is the cycle correct, sir? Should be correct. And what should be the dryness fraction here? It should not exceed, मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट एक्सीड 15%। मतलब 85% से कम ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन इज लो एट द टर्बाइन एग्जिट, इट विल डैमेज टर्बाइन ब्लेड्स। तो व्हाट इज द ड्राइनेस? 85% का मतलब दैट इज लिक्विड, लिक्विड मॉइस्चर कंटेंट। तो वेपर कितना होगा, ड्राई पार्ट कितना होगा, 85%। सो यहां का ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 85, उससे कम हम ले ही नहीं लेंगे सर। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। एक बार देखो, अभी क्या दिया है सर, इसको थोड़ा मूव करेंगे हम। ठीक है ना, देखो। हाँ, देखते हैं सर, देखो। प्रेशर एंड टेम्परेचर 0.08, दिस इज 0.08 बार। ओके, टेम्परेचर, द स्पेसिफिक एंथैल्पी HF इज, मित्रों, द प्रेशर 0.08, टेम्परेचर दिया इस प्रेशर का टेम्परेचर, ये दिस टेम्परेचर इज 41.55। ओके, HF is 173.88 और Hg दिया है सर। सी ऑल दीज आर एट लोअर प्रेशर। देखो एक बार देखो, एंड
an exhaust pressure of this turbine exhaust. Turbine का inlet ये है turbine exhaust. At the turbine exhaust, the pressure is 0.08 bar. So here the enthalpy is given. So what is Hg? 0.08. Hg is 2576.98. Okay. And the entropy is given, sir, yahan ka. The entropy is given. S3 is equal to SF is equal to, what is the entropy given? 0.5926. Excellent. And what is Sg, sir? 8 point, यहाँ का Sg दे रखा है 8.287. ठीक है. And the specific volume VF is given. यहाँ का VF दिया है सर. What is the value of VF? 0.001. And what is the specific volume, sir? VG. 0.001. Oh, 18.074. मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रहा है सर. Into 10 power 3. चलो ठीक है, जो है ले लेंगे, देखते हैं सर बाद में. ठीक है. Any other data given, sir? For superheated vapor at 418 bar, this highest pressure is 18 bar, and ये temperature is also given. क्या का temperature दिया है 400 degree, because the turbine inlet is at 18 bar and 400. So here the enthalpy is given. What is that? 3165.5. This enthalpy is given 3165 point, this enthalpy 0.54. So have you understood the question, sir? Have you understood the question, sir? Question समझ में? देखो, mean temperature of heat addition. What is the physical meaning of this? When the heat is supplied, the supply is starting at 4, the temperature is low. When the heat is supplied, slowly the temperature is increasing, and then the temperature is constant, phase change. Again, there is a sensibility. So during the process of heat supply, the temperature is not constant. Let us find out one hypothetical mean temperature which gives the same heat. मतलब, what is the heat supply, sir? देखो, heat supply is H1 minus H4. Is it correct, sir? Heat supply is taking place from 4 to 1. It is H1 minus H4. Absolutely fine. Let us calculate the heat supply. ठीक है. तो आप जानते हैं सर द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन? सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर. क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं, बस इसको समझेंगे सर. नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा मैं समझाऊंगा. इधर देखो, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन. एक सेकेंड. एक्चुअली during this process heat is supplied, supplied, so the temperature is not constant. तो मैं एक काम करता हूं सर, देखो एक सेकेंड. S4 which is also equal to S3 in this case, S1 which is also equal to S2. मेरे प्यारे दोस्तों, what is this? Is TS diagram, sir. TS diagram. What is the heat supply? The supply is taking place from 4 to 1. Let me apply steady flow energy equation. So heat supply will be H1 minus H4. अब मैं क्या कर रहा हूं? One hypothetical temperature I am calculating, sir. एक hypothetical, देखो एक बार, एक hypothetical. So एक hypothetical मतलब ये वाला temperature. So the temperature is increasing, remaining same, increasing. So I'll find out one hypothetical temperature. एंड इस टेम्परेचर को मैं Tm बोलूंगा सर, फॉर द सेम एंट्रोपी चेंज. देखो इस टेम्परेचर. तो व्हेन कैन आई कॉल दिस एज अ मीन टेम्परेचर? ऑन टीएस डायग्राम द एरिया विल गिव मी हीट ट्रांसफर, जो एक्चुअली हीट सप्लाई हो रहा है. सो हाइपोथेटिकली आप कैलकुलेट करना सर, दिस इज दिस एरिया. हाइपोथेटिकली यू कैलकुलेट दिस एरिया. So area under TS diagram, this is Tm
and this is S2 minus S3. So therefore, now heat transfer is equal to Tm into ये वाला S2 है और S1 जो भी है माइनस ये वाला कितना है सर S3 और S4. And please note on that this is the area calculated under this. This area is giving me heat transfer. तो इसको mean temperature तभी बोलेंगे when the actual heat transfer and this heat transfer is same. So now we equate H1 minus H4 is equal to Tm into S2 minus S3. So Tm will be equal to H1 minus H4 by S2 minus S3 and इसको बोलते हैं mean temperature of heat addition. Is it clear, sir? This we call it as, is the concept clear, sir? Now कुछ मत करना सर, you calculate the actual heat transfer from enthalpies. Heat supply देखो एक बार मित्रों, you calculate, देखो तो H1 माइनस H4 एक्चुअल हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करो. एक्चुअल हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने के बाद हीट ट्रांसफर के दौरान जो टेम्परेचर एंट्रोपी डिफरेंस आ रहा है during the heat transfer, whatever the entropy difference is coming, you find out that entropy difference, you multiply that entropy difference with mean temperature, so you equate this heat and this heat. So कुछ नहीं करने का सर, heat supply calculate करो. So this is the heat supply by corresponding change in entropy, so that will give me the mean temperature and that will be in Kelvin. Is it okay, sir? अभी कॉन्सेप्ट समझ में सर, कुछ नहीं करने का. Heat during the heat supply, calculate the entropy difference, calculate the heat transfer, heat supply. Heat supply by entropy difference will give me mean temperature of heat addition. Hope the concept is clear. My dear loving students, is the concept clear? Say something, dear. हाँ जी सर, अब आगे बढ़ते हैं सर. Now take the question. हाँ, do I know this? देखो heat supply entropy change. This is S3. This is S2. This is the entropy difference, which is S2 minus S3. Calculate. And already H1 is given. What is the heat supply, sir? Let's calculate heat supply. H1 minus H4. Let me write. Heat supply is equal to H1. H1 is 3165.54. H1, already H1 is known. H4, I do not know H4. Can anyone help me with H4, sir? सर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो तो क्या करेंगे? क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस सर? ये तो आइसेंट्रोपिक ही है ना सर. पंपिंग इज आइसेंट्रोपिक, टर्बाइन एक्सपेंशन इज आइसेंट्रोपिक, दोनों आइसेंट्रोपिक ही है ना सर. पूछ रहे सर आप. मुझे ना H4 चाहिए. अगर कोई क्लास में बताएंगे तो चॉकलेट दूंगा सर. I want H4. If someone gives me the value of H4, I'll give you chocolate. Say, I'm waiting for your answer, sir. And I calculate from pumper. Your teacher has clearly given specific volume into change in delta P should be equal to H4 minus H3. Yes, what is the specific volume here? What is the specific volume? Here the specific volume is 0.001 into pressure difference. This is 18 bar, dear students. This is 18 bar and this is 0.08. 18 minus 0.08, but that is in bar. 1 bar is 100 kilopascal, so multiply with 100. So that will give me H4 minus H3. Already H3 is known, 173.88. Now I want the value of H4. Please give me the value of H4. H4. 18 minus 0.08 into 100 into 0.001. ये 1.792 आ रहा है प्लस 173.88, तो ये आ रहा है 175.672 किलो जूल पर kg. That is my H4. Once H4 is known, what do I do? So heat supply calculate करो. Heat supply will be equal to 3165.54 minus H4. H4 is 175.672. So please give me the value of heat supply.
Is it correct, sir? Is this correct, sir? Should be correct. So once the heat supply is known, what is the mean temperature? It will be in Kelvin, sir. ये Kelvin में आएगा, sir. So it will be mean temperature is heat supply by entropy change during heat supply. So how do I calculate the entropy change? See, my dear students, come back to this. Huh. Already, so I want the entropy change. It will be equal to S2 minus S3. Already S3 is known. Already S3 is known. What is the value of S3? 0.59. So I have no problem with S3. I have problem with S2. But what will be S2, sir? It is in the wet region. So it will be SF plus X into SG minus SF. So S2 will be equal to SF. What is SF, sir? What is SF? SF is 0.5926. plus x is 0.85 given, SG minus SF. SG, देखो, x is already given, SF is already known, SG is 8.287, 8.287 minus SF is 0.592. Hope you are understanding, sir. I'm calculating the entropy here. Already the dryness fraction is given. Here SG is given. Here SF is given. So SG is given. SF is given. From those values, I'll calculate S2. सर कुछ तो बोलो सर. वेरी सैड सर. मैं जा रहा हूं सर. अब आई एम गोइंग. S2 आ गया सर. S2 आ गया सर. S2 आ गया. तो once S2 is known, so we will calculate delta S. What is the entropy change? S2 minus S3. S2 is 7.13284 minus S3. Already S3 is known 0.5926. बोलो बोलो. तो ये आ रहा है डेल्टा एस इज 6.54024. So therefore, mean temperature of heat addition will be Qs by delta S. So what is Qs, sir? Already heat supply is calculated by us. How much is the heat supply, sir? 2989 point something. तो ये आ गया सर. मित्रों, तो mean temperature of heat addition is equal to 2989 2989.868 by QS by delta S. यहाँ पे delta S है सर 6 point एक second. Here delta S is known 6.54024. Yes, this is the mean temperature. Hope you understood. क्या ऑप्शन उसी में है? वही पूछा सर. I think it is NAT. ओ डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है सर. सो ही हैज नॉट आस्क्ड इन केल्विन. सो डिग्री सेल्सियस में पूछा है. सो सबट्रैक्ट करो. सो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन सेंटीग्रेड इज 457.15 minus 273. 184. 184 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर. करेक्ट है ना सर? करेक्ट ना मित्रों? इज इट करेक्ट? वंडरफुल सर. वंडरफुल वंडरफुल. 184 point something is correct. Yes. Next question. सर हैव यू अंडरस्टूड सर? कसम से बोलो आपको समझ में आया सर? नेक्स्ट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. A refrigerator operating between 1.24 bar, this is 1.24 bar, and the higher is 13.6 bar, as shown in the figure. If the liquid is subcooled by 20 degrees centigrade after condensation, the percentage increase in wait. There are two cases in this question, sir. अच्छा question है, sir. Again, a respectable question. Dear students, again a respectable question, sir. एक second. Case 1.
Let me erase this. हाँ. Let me tell you very clearly. This is case 1, sir. 1, 2, 3 and 4. This is case 1 without subcooling. Subcooling is a constant pressure process. Matlab, after the condensation, the liquid is subcooled. In the first case, it is as it is without subcooling. And in the second case, तो एक काम करेंगे सर, तो सेकंड केस इधर, चलो कोई बात नहीं, इधर ड्रॉ करेंगे. Oh, let me erase. No problem. It's a good question again. Every question is a quality question, sir. Now it is subcooled. देखो देखो. It is subcooled. It is subcooled. So now the cycle is yes. Are you ready, sirs? Are you ready? इधर देखो. This is case 1. What is the difference? देखो एक बार. I request everyone to read the question. A refrigerator operates between a evaporator pressure of 1.24 and the condenser pressure of 13.6 as shown in the figure. The liquid is subcooled 20 degree. So initially, this is the condenser exit. So initially, the liquid is leaving at this temperature, at this state from the condenser. So after that, second case क्या है ना? It's not living here. तो 20 डिग्री नीचे आया, तो अब यहां से थ्रॉटल कर दिए. सो एट दिस स्टेट इट इज एंटरिंग द इवेपोरेटर. सो इसको हम लिखेंगे. इज इट क्लियर सर? इसको 4 डैश लिखेंगे. इसको 4 डैश लिखेंगे. यस. सो होप दिस टू केसेस आर क्लियर. डियर स्टूडेंट्स, आर दीज टू केसेस क्लियर सर? आर दीज टू केसेस क्लियर सर? हाँ देखो, let us calculate. You know, subcooling से COP बढ़ेगा सर, because subcooling से when it is coming down, देखो, without subcooling, if I do not subcool, ये point इधर आएगा सर. अगर throttle कर रहा है, तो refrigeration effect will be less without subcooling. With subcooling, the refrigeration effect increases, but we are not touching the power, work input. So definitely subcooling will result in more COP because refrigeration effect will increase. क्योंकि ये अगर नीचे, if this is coming down and this point is shifting to the left, so origin अगर subcool कर, देखो, understand carefully. If it is subcooled, so then throttle, this point will shift to the left, refrigeration effect will increase. No change in the work input. तो यहाँ का COP calculate करेंगे. What will be the COP in this case, sir? Refrigeration effect. H4, say 1 is refrigeration effect. So it will be H1 minus H4 by work input 1 say 2. So H2 minus H1. But you know very well, what is 3 to 4 processor? It is throttling. In throttling, what will remain constant? Enthalpy. So can I write H4 is also H3, sir? Because 3 to 4 is throttling. So H4 can also be written as H3. H4 can also be written as H3. ये हो गया. अब इधर आइए सर, यहाँ का COP सेकंड केस. तो देखो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. It's not 3. This is 3, sir. So 3, 4 is throttling. It's not 3, 4. So 3 dash, it's say 4 dash is throttling. So it will be 4 dash to 1 is in evaporation. So H1 minus H4 dash, it is refrigeration. By work input is H2 minus H1. Absolutely fine. So what is the relationship between 4 dash and 3 dash? 3 dash, 4 dash is throttling, throttling, throttling. So 4 dash can also be written as 3 dash. Correct. Yes. होप दिस इज क्लियर. क्या आपको समझ में आया सर? Someone said 12 points. अरे आज 5G तो डोमिनेट कर रहा है सर.
आज का दिन फैजी का है सर. What is COP1, sir? H1. What is H1? In the question it is given. H1 is 186.45. H3. What is H3, sir? H3 is 90.26. H2 minus H1. What is H2? 240.55 minus H1 is 186.45. So therefore, 186.45 minus 90.26. अरे यार 186.45 minus 90.26 divided by 240.55 minus 186.45. तो ये COP आ रहा है सर. This is the original COP. ये original COP. Whenever he is asking percentage change, it is always calculated with respect to original. What is the new COP, sir? नया COP क्या होगा सर? New COP is H1 minus H3 dash. H1 minus H3 dash. So what is H1? H1 is 186.45. H3 dash. What is H3 dash? 78.66 given by H2 minus H1. H2 minus H1. वो तो change नहीं हो रहा है. So H2 is 240.55 given in the problem and H1 is 186.45. हाँ. What is the answer, sir? 186.45 minus 78.66 divided by 240.55 minus 186.45. तो ये आ रहा है. So he is asking percentage change. Percentage change is not always calculated with respect to original. So it will be change into 100. So what is COP2? 1.992. And what is COP1? 1.778 by COP1 is 1.778. तो ये आ रहा है. As I said, it is increasing. तो पूछ सकता सर MSQ में. मस्त आया, मस्त क्वेश्चन है सर. ग्रेट क्वेश्चन. मित्रगणों, हे भगवान, क्लैरिटी आया सर बच्चों को? मित्रों 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 मित्रों, क्लियर? Again a good question, sir. Again a good. Always subcooling will result in increase of COP. So the same question can be asked like this. MSQ में पूछ सकता है सर. So the same question can be asked. Consider the following effects of subcooling in VC cycle. Subcooling. A decreases COP. नहीं 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 नहीं, इसको थोड़ा चेंज करेंगे सर. Subcooling increases refrigeration effect. B, no change in work input. C, increase in COP. D, decrease in work input. What is your answer, sir? What is your answer? I'm waiting for your answers. A, B, C. तृप्ति रंजन साहू. सबकूलिंग से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, वर्क इनपुट को तो टच ही नहीं करते हैं. सो जब आर ई देखो, सीओपी इज इक्वल टू आर ई बाई वर्क इनपुट इज कांस्टेंट, आर ई बढ़ रहा है तो सीओपी बढ़ेगा ही. ओके, डिक्रीज इन वर्क इनपुट तो घटेगा ही नहीं सर. सो 1 2 3 इज करेक्ट. एबीसी. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. ओके, नेक्स्ट. गुड. Someone asked me, sir, why are you not doing questions on Brayton cycle? ले लो.
Take this. Come on, come on. Huh? Yesh Patel. What about B? You're wrong. अभी डिलीट कर दिया, देखो कितना चालाक है वो. Yes, deleted. Very intelligent. Very smart boy. Come on. Read the question. A gas turbine with air as a working fluid has an isentropic efficiency of 70% when operating at a pressure ratio of 4. Now the pressure ratio is increased to 6. In both the above cases, the inlet condition to the turbine and the work output remains same. Assuming air as an ideal gas, with gamma is equal to 1.4, the isentropic efficiency of the turbine at a pressure ratio of 6. Read the question properly. Must question hai, sir. Ye. Again, a good question. Come on, come on. Again, a good question. First, let me draw the cycle. So I'm not showing the compression, only expansion part I'm showing, which is occurring in the turbine. So let us assume that the fluid is entering the turbine at 3, leaving at 4s. But whenever it is isentropic, this is the actual expansion. This is the actual expansion. Okay, sir. Sir, why are you not taking 1, 2? Generally, in gas turbines, 1 to 2, we take it as compression. 2 to 3, heat supply. 3 to 4, 3 to 4, what is 3 to 4? Expansion in turbine. That is the general procedure I am following, sir. Okay. अब देखो. Now, what is given in the question? एक बार देखो. What is the isentropic efficiency of a turbine? The isentropic efficiency of turbine is the actual work by isentropic work. Because of irreversibilities, the actual output obtained is less compared to the ideal case. So therefore, it will be H3 minus H4 by H3 minus H4s. At least you know this. This is the actual work, and this is dear students, this is not our regular class. So in regular class, I give very neat theory from zero level, because it is a marathon session. It is a revision class. Therefore, don't expect to give all the details. Okay. In class, I'll give you all details. There is no doubt about it. Okay. Right. Now, so H3 can be written as CPT3, CPT4, CPT3, CPT4. So CP gets cancelled. So it will be T3 minus T4 by T3 minus T4s. Absolutely fine. Now, देखिए sir. I have a question, sir. Can I apply? This is reversible adiabatic. This is irreversible adiabatic. Now, my question is, can I write T3 by T4 is equal to P3 by P4? Gamma means when by gamma. So this pressure is P3, so constant pressure, and this is either P4s or P4. देखो एक बार, P4s or P3. Okay. So can I write T3 by T4 is equal to P3 by P4? Gamma means 1 by gamma. बिल्कुल नहीं लिख सकते, because that is valid only when it is reversible adiabatic for an ideal gas. But this is irreversible. But इसके लिए लिख सकते sir. P3 by T4s is equal to P3 by P4s power gamma minus 1 by gamma. ये लिख सकते sir. So this I write P3 by T4s is equal to, what is P3 by P4s? P3 by P4s I'll write it as pressure ratio RP. RP power gamma minus 1 by gamma. ठीक है सर. यहां से तो देखिए,
Can you give me what is the turbine work, sir? The actual turbine work is the actual expansion is taking place from 3 to 4. So the actual turbine work is H3 minus H4. So the actual turbine work can be written as Cp into T3 minus T4. Absolutely fine. So the actual turbine work is Cp into what is T3 minus T4, sir? इधर आइए, इधर आइए. Oh my God, so many calculations we have to make it. देखो देखो एक सेकंड. हाँ. So T3 minus T4 is equal to T3 minus T4 is turbine efficiency into T3 minus T4s. Am I right, sir? देखो एक बार. So T3 minus T4 is you bring this to this side. So T3 minus T4 is turbine efficiency into this. Okay. So T3 minus T4 is equal to turbine efficiency. Let me take T3 bar. So 1 minus T4s by T3. Absolutely fine. So I multiply both sides with Cp. This will be Cp T3 minus T4 is equal to Cp दोनों साइड. तो टर्बाइन एफिशिएंसी इंटू T3 इंटू इसको क्या लिखेंगे सर? देखो एक बार. T3 by T4s is Rp. लेकिन ये उल्टा है सर. This is उल्टा. This is उल्टा. T4s by T3. What is T4s by T3? 1 by Rp. So 1 by Rp power gamma minus 1 by gamma. ठीक है सर. तो अब देखो इसको बोलेंगे हम टरबाइन वर्क. इस बार का पावर प्लांट ऑन केम फॉर आईईएस बैचेस इट विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर. आप देखते जाना बिकॉज वो मेरा वेपन है सर. देखो दिस इज द टरबाइन वर्क. दिस इज एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन सीपी T3 into 1 minus 1 by Rp power gamma minus 1 by gamma. This is the general equation. अब बोल क्या रहा है? This is the general equation that we have derived. यहां तक सबको समझ में आया सर? विच वर्क की सेम नहीं समझ में आया. चलो बिल्कुल सर. तो एटलीस्ट मिस्टर कौन है रही है? मोहम्मद फैजी. एटलीस्ट ये वाला इक्वेशन क्लियर है सर. टर्बाइन वर्क आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ इनलेट टेम्परेचर टू द टर्बाइन, टर्बाइन आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी एंड प्रेशर रेशियो. ये तो इसमें कोई टेंशन नहीं है सर. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ टर्बाइन वर्क. इफ पॉसिबल याद रख लेना. अब देखो सर, नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन. ये वाला इक्वेशन ले लेंगे. It will be efficiency of turbine CPT3, efficiency of turbine CPT3 1 minus 1 by RP. Okay, तो ये टर्बाइन वर्क है. अब आइए क्वेश्चन की तरफ. पढ़ो सर एक बार. देखो एक सेकंड. द अभी तो बताया द टर्बाइन वर्क इज efficiency of turbine Cp into T3 1 minus 1 by Rp power gamma minus 1 by gamma. ये अभी हम just now we derived the equation. Okay, see the question. A gas turbine with air as a working fluid has an efficiency of 0.4, 0.7 when the operating pressure ratio is 4. जब pressure ratio 4 है, the isentropic efficiency is 0.7. Now the pressure ratio is increased to 6. अब pressure ratio बढ़ाया गया 6 को. In both the cases, मतलब when the pressure ratio is 4 and when the pressure is 6, दो cases है. One case is of pressure ratio 4, other case is of pressure ratio 6. दोनों cases में the inlet condition to the turbine is same. दोनों condition में T3 same है. Both the cases the inlet condition is same and the work output also same. मतलब दोनों cases में जो turbine से work मिल रहा है, दोनों cases में when the pressure ratio is 4, you get some work output. When the pressure ratio is 6, you get some work output. So in both the cases, whatever the turbine is developing, it is same. In both the cases, the turbine inlet condition is also same. At least now have you understood, sir? My dear loving students, have you understood? समझ में आ गया सर. अब क्या करना है सर? This is the turbine work. अब ये जो turbine work है ना, दोनों केसेस में इक्वेट कर लेना. देखो एक बार, मस्त क्वेश्चन है सर. आई लव दिस क्वेश्चन. देखो देखो एक बार, देखो. So equate turbine work in first case is equal to turbine work in second case. It is given. I am not taking, sir. I am not taking. Equate करो. So efficiency of turbine CPT3 1 minus 1 by Rp power gamma minus 1 by gamma. This is case 1 turbine work should be equal to efficiency CPT3 1 minus 1 by Rp gamma minus 1 by gamma. This is my case 2. He only gave, मैं नहीं ले रहा. अब देखो सर क्या बोला है.
Cp तो सेम रहेगा सर, वो तो फ्लूइड प्रॉपर्टी है. एंड टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर इन बोथ द केसेस द इनलेट कंडीशन इज सेम. तो T3 स्वाहा. सो अब बचा क्या है? सो फर्स्ट केस एफिशिएंसी into 1 minus 1 by rp1 power gamma minus 1 by gamma should be equal to second case efficiency 1 minus 1 by rp2 gamma minus 1 by gamma. Hope you understood this, sir. मजा आ रहा है सर? मजा आएगा रे, अब मजा आएगा रे. आया ना? Now you put, in the first case the efficiency is 0.7. In the first case the pressure ratio is 4. Gamma is 1.4 minus 1 is 0.4 divided by 1.4. That should be equal to, second efficiency is unknown, 1 minus 1 by rp2 is 6. Gamma is 1.4 minus 1 is 0.4 by 1.4. So yahan se we can easily calculate the second efficiency. अरे वो यार, देखो देखो देखो. Whenever efficiencies are given, he means the actual work. Whenever efficiencies are given, कभी भी याद रखना, क्या आइडियल से रेफरेंस होता है? नहीं ना, इट इज एक्चुअल वर्क. देयर इज नो एम्बिग्विटी इन द क्वेश्चन. तो वो जब भी एफिशिएंसीज पूछता है तो हमेशा याद रखना, when the term efficiency comes it will be actual. Clear? Clear? Mr. Mohammad Faizi. मोहम्मद फैजी डा 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 डा. नहीं आ रहा है रे. दिस इज कमिंग आउट टू बी लेफ्ट साइड आ रहा है 0.2289. तो ये वाला देखो, तो ये आ रहा है सर 0.400. ओ छोड़ दो, 0006. तो ये आएगा इंटू 0.2289. आई एम गेटिंग द आंसर एज सेकंड केस एफिशिएंसी एज 0.5713 और 57.13. मस्त क्वेश्चन था या नहीं सर? बताइए सर, क्या क्वेश्चंस करवा रहा हूं सर, लेकिन आपको कोई पता नहीं यार, यू आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट. मैं जा रहा हूं सर, हमारे बड़े साहब की तरह एक एक मिनट में ड्रेस चेंज करने के लिए जा रहा हूं सर. क्लियर? इज इट नॉट अ गुड क्वेश्चन सर? यू आर नॉट लविंग द सेशन सर. चलो लीव इट. ये करो, ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे. हाँ देखो, द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज 0.015 kg vapor per kg of dry air. The standard barometric pressure, मतलब the total pressure is 760 mm of Hg. What is the partial pressure in mm of vapor? Partial pressure of vapor, actually partial pressure of vapor. Simple सा question है sir. Omega is 0.622 PV by P total minus PV. ठीक है sir. One more thing. If this is in mm of Hg, this will be in mm of Hg. If this is in bar, this will be in bar. If this is in kilopascal, this will be in kilopascal. The answer is asked in mm of Hg. So keep everything in mm of Hg. Answer दीजिए sir. वंडरफुल सर. मोहम्मद फैजी तो आज छा गया, पता नहीं क्या खा के आया वो. आज तो वो डोमिनेट कर रहा है सर. व्हाट इज पी टोटल सर? 760 माइनस पीवी. तो कितना आ रहा है सर ये? आई थिंक फ्रॉम हियर वी कैलकुलेट पीवी. मोहम्मद फैजी into 760. So I am getting this as 17.89 mm of mercury. अब ये मत करते बैठना सर,
P इज इक्वल टू रो जी एच, मर्क्यूरी का है 13,600, जी इज 9.8 वो गलत नहीं बोला सर, वो भी सही है, लेकिन इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। रो जी एच तो रोजी इधर इधर कैंसिल हो जाएगा ना सर, बिकॉज इट इज द रेशियो। समझ गए ना? राइट right. ये करो फटाफट। देखो, ऑटो साइकिल हैज अ सिलेंडर डायमीटर ऑफ 200 mm, लेकिन एक बात देखो, द क्लियरेंस वॉल्यूम इज गिवन इन सीसी। व्हाट डज सीसी मीन? क्यूबिक सेंटीमीटर। सो कन्वर्ट दिस आल्सो इन सेंटीमीटर, and the stroke length is 250 mm. What is 250 mm? It is 25 centimeter. So let us calculate the swept volume. So it is pi by 4 d square L. So pi by 4 d square L is 25. This will be centimeter square. This will be cubic centimeter. So the compression ratio is 1 plus Vs by Vc. So therefore it is 1 plus. What is the swept volume, sir? The swept volume is pi by 4 d square into L by the clearance volume is 1570. Can you give me the value of, sir, ये याद रख लेना sir, this is very very important equation for compression ratio. बोलो 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 रे। Is the compression ratio 6? Yes. क्या पूछा है सर? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज 1 माइनस, ये ऑटो साइकिल है सर, सो देयरफॉर it is 1 minus 1 by r power gamma minus 1. Am I right? इतना आ रहा है सर, व्हाट इज द एफिशिएंसी? नहीं, आंसर क्या आ रहा है सर? एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 0.5117 कुछ आ रहा है सर। आई थिंक आई एम गेटिंग द आंसर एज 0.51 by परसेंटेज में पूछा है ना? करेक्ट, शुड बी करेक्ट ना? चलो, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई विल गिव यू ब्रेक। ब्रेक दूंगा सर 3 आवर्स, मतलब अभी 20 मिनट्स के बाद ब्रेक दूंगा सर, अभी नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू नॉट। डोंट आस्क, डोंट आस्क सर, आई विल गिव यू। मेरे स्टैमिना से जाना है आपको, बिकॉज आई एम द ड्राइवर। हाँ, मस्त क्वेश्चन है सर, मस्त क्वेश्चन है रे बाबा। आई गिव यू ब्रेक एट 11 o'clock बिकॉज वी स्टार्टेड एट 8 o'clock। 3 आवर्स के बाद ही ब्रेक होगा, मत पूछना ब्रेक। चलो, रीड द क्वेश्चन, रीड द, कैन यू सी सर? इफ आई मिनिमाइज, कैन यू सी? एक सेकंड मैं देखता हूँ, थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या सर? चलो फिर, छोटा दिख रहा है तो सही नहीं है। सो कैन, यस 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 ना? हाँ जी सर। इन समझ से सर, ब्रेटन साइकिल पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन में सारा दुनिया दिखाऊंगा ब्रेटन का, एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट दुनिया।
सर ब्रेटन साइकिल नहीं करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन वी डिड ऑन ब्रेटन साइकिल विद आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, in an ideal Brayton cycle, air from atmosphere at 1 atm 300 Kelvin is compressed to 6 atm. The maximum temperature in the cycle is limited to 1100. The heat supply is oh ho 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 ho. Which of the following statements are true? Okay. Is the representation of Brayton cycle correct, sir? Isentropic compression in compressor. Heat supply, maybe heat exchanger or combustion chamber. ठीक है. Isentropic expansion and constant pressure heat rejection. Okay. So he has not said anything about isentropic efficiencies. That's why I'm taking isentropic only. Is it okay, sir? Is this okay? Say something, dear. Yes, sir. अब देखो. P1 is given as 1 atm and T1 is given as 300 Kelvin. देखो, the at the inlet 1 atm 300 Kelvin and is compressed to 6 atm, and the maximum temperature, which one is the maximum temperature? T3, and T3 is equal to 1100 Kelvin. Absolutely fine. And the heat supply is 100 megawatt. Okay. What is the efficiency, work ratio, back work ratio, power output from the turbine? Okay, sir G. Are you ready, sir G? Okay, देखते हैं sir. Can you give me the efficiency of a simple Brayton cycle? मुझे याद है sir. The efficiency of Brayton cycle is 1 minus 1 by Rp power gamma minus 1 by gamma. Is this correct or wrong, sir? मित्रों, is the efficiency of Brayton cycle correct or wrong? Say something, dear. I think it is correct. So what is the pressure ratio? The pressure ratio is equal to P2 by P1. It is compressed from 1 atmospheric pressure to 6 atmospheric pressure. So the ratio is 6. Okay. So efficiency of Brayton cycle is 1 minus 1 by Rp is 6. Gamma is 1.4 minus 1 by 1.4. The working fluid is air. तो एक बार देखते हैं सर. I'm getting the efficiency as zero point 0.4, which is 40%. So the first option is correct. Yes. So is the first option correct? 100% correct. Next. Efficiency is equal to net power output by heat supply. If this is in watt, किसमें दिया sir? Megawatt. This will also be in megawatt. So what is the efficiency, sir? 0.4 is equal to net power output. The net power output by the supply is 100 megawatt. So what is the net output, sir? The net output is, if this is in megawatt, this will also be in megawatt. So it will be 40 megawatt. The power output is 40 megawatt. So what about the अरे ऑप्शन देखो एक बार. हाँ. The power output is 40. D is also अरे क्या हुआ? पता नहीं यार, ऐसा कैसा होता? So power output D is also correct. यहां तक क्लैरिटी आ गया सर? क्लैरिटी आ गया सर? Yes. Now he is asking work ratio and back work ratio. कैसे करें मित्रों? Wait. So can you tell me what is work ratio? Work ratio is nothing but net work by positive work, that is turbine work. Already net work is known 40 megawatt. So somehow if we calculate the turbine work, the problem is solved. Okay. Say something, dear. Okay. सब लोग ready है sir? Yes. Now देखो. How do I calculate the turbine work? देखो turbine work is T3 minus T4. Okay.
सो इज T3 गिवन? यस। आई डू नॉट नो T4। हम T4 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो देखो एक सेकंड। आई थिंक आई गेव यू सम कॉन्सेप्ट्स। एक बार देखो, विल मूव टू दोस कॉन्सेप्ट्स। दोस कॉन्सेप्ट्स आर in Otto cycle as well as in Brayton cycle. There is one equation I gave you. The product of odd temperatures is equal to the product of even temperatures. Even if you don't know, I can derive that. T2 by T1 is Rp per gamma is gamma. T3 by T4 is Rp per gamma is gamma. So pressure ratio दोनों के लिए सेम है, तो Rp Rp कट जाएगा. T2 by T1 is equal to T3 by T4. T2 by T1 is T3 by T4 means product of even temperatures is product of odd. देखो ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं? Because the supply and rejection are occurring at same nature of process, therefore the ratio, pressure ratio इसके लिए same है. Similarly Otto cycle में heat supply and rejection is occurring at same, under same volume conditions, that's why. Hope this is clear sir. यहां से मैं क्या करूंगा सर? फर्स्ट आई कैलकुलेट T2. आई थिंक T2 को कैलकुलेट करेंगे. देखो एक बार, 1 to 2 is reversible adiabatic. Can I write T2 by T1 is equal to P2 by P1 power gamma minus 1 by gamma? Can I write T2 by T1? Because 1 to 2 is reversible adiabatic. बिल्कुल लिख सकते सर. So T2 by T1 is 300. What is P2 by P2 pressure ratio? Which is already 6. It is 1.4 minus 1 by 1.4. Please give me the value of T2. मित्रों, this is 500. Once T2 is known, एक बार गेट एग्जाम में क्या पूछा है सर पता है आपको? सेम क्वेश्चन में इज आस्किंग T2 एंड T4, बट दिस इज बियॉन्ड दैट. इट इज बियॉन्ड दैट. T2 आ गया. Once T2 is known, come back. यहां आइए. So T1 T3 is T2 T4. T1 T3 is T2 T4. So T1 T3 is T2 T4. T1 is 300. T3 is already given 1100 is equal to T1 T3 is equal to T2 T4. T2 कितना है सर? 500.5 into T4. And one more simple question sir, अगर compression reversible adiabatic नहीं है, expansion reversible adiabatic नहीं है, तब product of even is equal to product of odd मत करना सर, with actual temperatures. Okay? हाँ, anyone with is it 659? Yes. So let's calculate the turbine work. Turbine work is mitron 3 say 4 H3 minus H4. So therefore the turbine work is H3 minus H4, or the turbine work is Cp into T3 minus T4. यहाँ पे you'll be facing one problem. I'll tell you what is that problem. So the turbine work is Cp is 1.005, T3 minus T4. T3 is, what is T3 sir? 1100 minus T4. What is T4? 659.27. So therefore, this is in kilojoule per kg. Network is in megawatt. This is in kilojoule per kg. क्या करेंगे सर? Is the network clear, sir? Your questions are top notch. Where can I find PDF? So wait, I'll give you the Telegram link. In the Telegram link, I'll share the PDF. Okay, चलो. तो अभी एक डाउट आ रहा है सर. नेटवर्क आया रे. हाँ, what is the compressor work sir? एक सेकंड, चलो कोई बात नहीं. Let's calculate the compressor work. The compressor work is H2 minus H1. So देखो देखो एक सेकंड. The compressor work is 1 to 2 H2 minus H1. So therefore, Cp into T2 minus T1. Absolutely fine. Cp is 1.005. Already we have calculated T2. T2 कितना है sir? I think we calculated T2 and it is 500.5. And T1 is 300. Am I right, sir? T1 is 300. Right. Ah. So what's the value of एक second.
तो 201. So what is work ratio? Work ratio is equal to net work. Net work is turbine minus compressor by positive work. I repeat, sir. Work ratio is net work is turbine minus compressor by net work by positive work. So this can be written as 1 minus WC by WT. So therefore, work ratio is 1 minus WC is 2. I have given the physical significance of all these in our regular class. And 442.933. ये आ रहा है the work ratio is 0.545. And what is back work ratio? Anyone? What is back work ratio? सर क्लास में बताया था सर, कुछ तो बोलो. Back work ratio is negative work by positive work. Negative work is compressor and the positive work is turbine work. So back, already you know that work ratio plus back work ratio is 1. You can calculate back work ratio as 1 minus r work ratio, or you can calculate like this also. So 201.5 divided by the turbine work is, what is the turbine work, sir? 442.9. देखो ऐड करो दोनों, यू विल गेट 1. You add both, you get 1. This is the work ratio and this is the back work ratio. Correct? So अब बोलो options. Which one is correct, which one is wrong? अब बोलो, एक बार देखते हैं. हम आंसर करो. The work ratio is 0.345. गलत. 0.55 some. Back work ratio, yes. I think this is correct ना. In the A, C, D are correct ना. देखो एक ही क्वेश्चन में सारे आ गए नहीं सर. सर ब्रेटन से किल करवाओ. क्या पागल समझे मुझे? क्या सिंपली आपको आके कुछ बोल के हवाबाजी करके निकल जाने के लिए आ गए क्या? है ना? करेक्ट. नेक्स्ट. आफ्टर दिस क्वेश्चन विल टेक अ ब्रेक. क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 18th. दो क्वेश्चन करके ब्रेक ले लेंगे सर. ओके सर. ओके, सब लोग बोलो. थोड़ा कुछ खा लो आप और मजे में पढ़ेंगे हम. टेंशन लेने का नहीं सर. Come on, come on. Come on, come on. चलो चलो. ओके, लेट्स प्रोसीड. अच्छा चल रहा है सर. देखो, ब्रिटन साइकिल विथ रीजनरेशन. क्या करो सर इन बच्चों को? क्या करो सर इन बच्चों को? रीजनरेशन. ठीक है. ये क्या है सर? देखो देखो.
ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन गैस टर्बाइन इज ब्रेटन साइकिल विथ एफिशिएंसीज। ठीक है सर, और क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए सर, एनीथिंग मोर? कहां गया? हाँ, ये है ना दूसरा, एक सेकंड। अभी देखो, ब्रेटन साइकिल विथ रीजनरेशन विथ एफिशिएंसीज, देखो विथ एफिशिएंसीज। सर पूछो मत सर, मुझे सब पता है क्या लेवल करवाना है। डोंट टीच योर ग्रैंडफादर हाउ टू कफ। समझ गए ना? आप उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा मिल रहा है सर आपको। दिखा आपको, आप बोले आ गया हाजिर। देखो, डोंट टेक मी सो लाइटली। उतना आसान इजीली मत लेना, मुझे हल्के से मत लेना सर। हाँ, खतरनाक क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी और चौंक जाएंगे सर आप। यू विल बी शॉक्ड फर्दर। देखो कैसा, एक बार देखो, ये वाला क्वेश्चंस देखो, खतरनाक है। डोंट वरी सर। चलो चलो चलो, लेट्स कंप्लीट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आने वाला पल जाने वाला है रे, जाने वाला पल आने वाला है। 18। आपने मेरा 1 मिनट बर्बाद कर दिए। कम ऑन कम ऑन। Moist air at 105 kilopascal, 30 degrees centigrade and 80% flows over a cooling coil in an insulated air conditioning duct. Saturated air exits the duct. Okay. The saturation pressure of water. The saturation pressure of water at 30 degree area, the molecular weight is given. Okay. The moisture removed. अच्छा, the question is something like this. ये डिस्टर्ब हो रहा है सर, इसको मैं करता हूँ, कुछ इंतजाम करता हूँ सर। The air is entering at 1 and the air is leaving at 2. Read the question. And some moisture is removed. How do you know moisture? He only said what is the moisture removed from air. ये पूछा है सर, अच्छा क्वेश्चन है सर। Moist air at 105 kilopascal, मतलब the total pressure is 105 kilopascal, उसमें कोई बदलाव नहीं है। Okay, 30 degree. So this temperature is 30 degrees centigrade and the relative humidity is 80%, that is 0.8. Flows over a cooling coil in an insulated duct. चलो, ये पूरा insulated है मित्रों। Okay, and exits at, oh ho ho ho, प्रेशर चेंज हुआ रे, बी केयरफुल सर। दिस इज 105। हाँ 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 हाँ, द इनलेट प्रेशर इज 105 किलो पास्कल एंड व्हाट इज द एग्जिट। एक सेकंड एक सेकंड, बी केयरफुल सर, डेटा को स्मूथली ले लेना, स्मूथली ले लेना। बी केयरफुल सर, अच्छा क्वेश्चन है सर। एंड एग्जिट्स एट 100 किलो पास्कल and the temperature at the exit is 15 degrees centigrade. The saturation pressure at 30 degree, तो यहां का PVS दे रखा है सर at 30 degree. At 30 degree, the saturation pressure is 4.24 kilopascal. ठीक है। And at 15 degree, it is 1.7. 15 डिग्री 1.7 किलो पास्कल, आराम से, टेंशन नहीं लेने का सर। 1.7। ओके ओके ओके, हाँ। हाउ मच मॉइस्चर इज रिमूव्ड? हाउ डू वी डू दिस सर? आप थोड़ा हिंट दीजिए, आई वांट हिंट फ्रॉम यू पीपल। इट्स अ केस ऑफ कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हाउ डू वी डू दिस सर? देखो देखो एक सेकंड, कुछ नहीं है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा हियर, कैलकुलेट ओमेगा हियर। The difference of omega is moisture removed because omega is for 1 kg dry air, how much is moisture associated? So dry air is not changing, only moisture is changing. So the difference of these two omegas will give me the value of moisture removed. चलो एक बार ओमेगा 1, ओ हो और कुछ इंफॉर्मेशन दिया सर, एक बार देखो। समथिंग इज मिसिंग। देखो एक बार, व्हाट इज दैट मिसिंग? कुछ मिस नहीं हो रहा सर।
close over cooling coil, duct saturated. देखो, saturated air exits the duct. What air is existing? Saturated air. Whenever air is saturated, what is the relative humidity? For saturated air, the relative humidity is 1 or 100%. Absolutely fine. सवाल को कर लेंगे सर, क्या दिक्कत है? नो दिक्कत एट ऑल. सो ओमेगा 1 is equal to 0.622 PV by P total minus PV. Okay, sir. But unfortunately, I don't know PV1. But where is the problem? Phi is equal to PV by PVS. So therefore, phi1 is 0.8 and PV1 is, I do not know, sir, PV1 by PVS1. What is PVS1, sir? 4.24. So what is the value of PV1, sir? 3.392 kilopascal. So let's calculate omega here. ठीक है, अब इधर आइए. Now come to the second section. यहाँ पे phi2 is equal to PV2 by PVS2. As phi2 is 1, PV2 will be equal to PVS2. So already PVS2 is 1.7. So omega 2 is 0.622 PV by P total minus PV. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना सर. The total pressure हल्का सा चेंज हुआ. So whatever values are given, because numerical ability type होगा तो दिक्कत होगा, रेंज से बाहर जाएगा. So inlet total pressure, outlet total pressure is slightly different. Be careful in noting that. चलो कोई बात नहीं. तो omega 2 will be equal to 0.622. PV2 is 1.7 and P total is, second case में P total देखो देखो एक second. In the second case, the P total is given as 100. Don't take 105. 100 minus PV2 is 1.7. Please give me the value of omega 2. सब लोग है क्लास में? So delta omega is equal to, so moisture removed will be equal to omega 1 minus omega 2. अरे यार, why not omega 2 minus omega 1? Actually फाइनल में इनिशियल नेगेटिव आ रहा है, मतलब मॉइस्चर कम हो गया. रिमूवल क्या है? इनिशियली ज्यादा था, बाद में कम है. द डिफरेंस इज रिमूवल ओनली. रिमूवल इज नेगेटिव टर्म. ओके, राइट. तो इट विल बी 0.2076 minus 0.010758. पॉइंट गलत हुआ क्या सर? ये इज द वैल्यू रॉन्ग? गलत हुआ. 0.0 आना चाहिए. कोई बताए सर इसको? गलत है सर.
बाद के जीरोस छोड़ देना सर, 0.01 आ रहा है. What is the unit of this, sir? So many kg of vapor per kg of dry air. But is he asking in the same unit? एक बार देख लेना. Just check once. He is asking in gram per kg dry air. So be careful, sir. So gram per kg, 0.01. 1 kg is 1000 gram of vapor per kg dry air. So this will be equal to कितना होगा sir? I think 10. So 10 gram of vapor is removed for 1 kg dry. And finally, you should be careful with units, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सर. आज के क्वेश्चंस एक एक लेवल है सर, लेकिन अब लास्ट में जो आने वाले हैं वो थोड़ा डेंजर है सर. सो वी विल टेक अ ब्रेक. माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ ब्रेक. हाउ मच टाइम डू यू वांट फॉर द ब्रेक? कितना समय चाहिए सर ब्रेक के लिए? नो, एज पर माय वॉच 9.9 10 ग्राम. 10 इज करेक्ट. हाउ मच टाइम डू यू वांट कंटिन्यूअसली? मतलब अच्छे क्वेश्चंस किए सर. कितना ब्रेक ले लेंगे सर? 15 मिनट. 11:05. So let us meet at 11:20 a.m. Will that be fine? 11:20 नहीं, 15 मिनट काफी है रे, क्योंकि आज एग्जाम भी है ना. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. ओके, चलो फिर, बाय बाय. लेट्स टेक अ ब्रेक. मित्रों, विल टेक अ ब्रेक. ठीक है सर जी. ठीक है सर जी. मैं क्या करूं सर जी? इसको थोड़ा ऑफ करेंगे थोड़ी देर के लिए. ओके, चलो, विल टेक अ ब्रेक.
चलो वेलकम बैक। स्टार्ट। किससे? ओ माय गॉड, आज 2:30 बजे एग्जाम भी है ना। बहुत बहुत एक्टिविटीज है सर। अगर सब लोग दिन बंद दुख हरता। वॉइस सीधा नहीं आ रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विदाउट वेस्टिंग टाइम, टोटल कितने हैं रे? 55 10। ओके। डीजल साइकिल एफिशिएंसी, पहले हम डीजल साइकिल को ड्रॉ करेंगे सर। फर्स्ट विल ड्रॉ डीजल साइकिल। The only difference between Otto and diesel cycle is in the process of heat addition. ठीक है सर। Okay, the cylinder diameter is 250 mm, which can be written as 25 centimeter, and the stroke length is 375 mm, which can be written as the 37.5 centimeter. The clearance volume is 1500 cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, what the cutoff occurs at, देखो देखो, with fuel cutoff occurring at 5% stroke. You tell me what is the stroke length? Stroke length is nothing but maximum volume minimum volume difference. This we call it as stroke length. So the stroke length is v1 minus v2. Heat supply is taking place at 2 and the supply is cut off at 3. I repeat, the supply is taking place at 2, cut off is 3. This volume, the cutoff is occurring, this volume, the cutoff volume, the cutoff is occurring V3 minus V2 at what stroke? 5% of the stroke. That is given in the question. देखो, the fuel cutoff occurring at 5% of stroke. The cutoff, मतलब supply is starting here, ending here. So this is the cutoff. Cutoff is taking place at 5% of stroke. So therefore, what is the cutoff ratio, sir? Compression ratio is V1 by V2 and the cutoff ratio is V3 by V2. Absolutely fine. So दोनों तरफ, अरे अल्लाह क्या हुआ रे? ओके, दिस इज वी। हाँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना, तो v2 से v3 by v2 -1. Why are you doing? Because to find the efficiency of diesel cycle, you should know the compression ratio, you should know the cutoff ratio. So is the compression ratio given? यहां से we can calculate, और cutoff ratio यहां से calculate करेंगे. So divide both sides with 2, v2 v2 v2, 0.05 v2 से डिवाइड करो, v1 by v2 -1. Am I right? Yes. So this is cutoff ratio. -1 is 0.05. What is V1 by V2? Compression ratio. Oh my God, I don't know what compression ratio. The compression ratio is 1 plus Vs by Vc. So the compression ratio is 1 plus Vs. Pi by 4 d square L. D square is 25 square into L is 37.5 by 1 plus Vs by Vc. What is Vc? Vc is 1500. तो यहां से आपको मिलेगा कंप्रेशन रेशियो। एनीवन विद कंप्रेशन रेशियो सर? क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे सर, मैक्सिमम विल ट्राई टू कंप्लीट, तो मैक्सिमम विल ट्राई टू कंप्लीट, डोंट वरी। ठीक है सर? ठीक है, तो शिफ्ट एक्सपोनेंट बाय 4। इस बार तो थोड़ा लेट हो गए ना रे, इसीलिए टेस्ट सीरीज। अब अगली बार टेस्ट सीरीज देखना केम का, एंड इट्स माय प्रॉमिस
जो टेस्ट सीरीज हमारा स्टार्ट हो रहा है, इट्स अ प्रॉमिस कि इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट टेस्ट सीरीज इन आवर कंट्री। ये मेरा प्रॉमिस है सर, अगली बार जो गेट के लिए होगा। ओके, नाउ व्हाट इज द कट ऑफ कंप्रेशन रेशियो आर? दिस इज आर, आर इज इक्वल टू 13.27 -1, तो ये आ रहा है, तो -1 into 1 plus 1. So the cutoff ratio is 1.63, sorry, 1.6136. So I know the compression ratio, cutoff ratio. Now let's calculate the efficiency. इसके chances है sir इस question के. So the efficiency of a diesel cycle 1 minus 1 by R power gamma minus 1 into RC power gamma minus 1 by gamma times RC minus 1. ये सही है sir? बिल्कुल सही है. So the efficiency is given by 1 minus 1 by R is 13.27, gamma is 1.4 minus 1 into RC is 1.6136, 1.6136, power is 1.4 minus 1 by gamma is 1.4, 1.6136 minus 1. तो यहां से I can calculate the efficiency. बोलिए सर आंसर क्या आ रहा है? So what is the answer, sir? Make it fast, make it fast. अरे यार, सब सही किया, आंसर गलत कैलकुलेट किया। 0.605 आ रहा है ना गामा? क्या गामा नहीं होता है? गामा नहीं होता है, कौन बोला नहीं होता है? गलत है। हाँ, देखो एक बार, एक बार चेक करो बेटा। समवन सेड गामा नहीं होता है। क्यों वैल्यू गलत आ रहा है मुझे? मेरा आंसर आ रहा है सर 0.605। मैं रिवाइज नहीं किया, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन आप गलत मत करना। क्या ये गलत है सर? गामा होता है या नहीं होता है? मोहम्मद फैजी है? गामा होता है या नहीं होता है? व्हाट इज दिस? हाँ, शायद मेमोरी भूल भूल सकता हूं सर, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। अब देखो एक बार, इज द इक्वेशन करेक्ट सर? अरे आप लोग रिवीजन कर रहे हैं सर, रिवीजन कर रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं, करेक्ट है? एक बार देख के बताओ। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ऑलवेज राइट। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई कैन कमिट मिस्टेक्स सर, and there is nothing wrong in committing mistakes, but admitting those mistakes is the greatness. ठीक है, आई नेवर सेड कि आई एम ऑलवेज करेक्ट ना। ठीक है, चलो। A refrigeration cycle uses freon as the working fluid. The temperature of the refrigerant in the evaporator is -10. The condensing temperature is okay 40. The cooling load is this. अच्छा क्वेश्चन है सर। The volumetric efficiency of the The volumetric efficiency of the compressor is 0.8. The speed of the compressor is 720 RPM. Okay, the displacement or the swept volume of the compressor. अच्छा, okay. एक बार सही के अच्छा क्वेश्चन है सर. Let us respect this question. If nothing is given, I'll take a simple VC cycle. ठीक है सर. हाँ.
This is the VC cycle, correct? Okay. What is the cooling load? The refrigeration capacity or the cooling load is 150 kilowatt. मेरे प्यारे दोस्तों 150 watt. So क्या मैं इसको 0.15 kilowatt लिख सकता हूं सर? One student said, sir, why are you writing in kilowatt? There is a reason. All these enthalpies are in kilojoule per kg, and of course the specific volume is meter cube per kg. Be careful, sir. Be careful. So as it is given in kilo, तो इसको किलो में कन्वर्ट करना लॉजिकल है. Okay. Now, can I write RC as mass flow rate of a refrigerant into RE? So what is the refrigeration effect? देखो, the heat is absorbed by the refrigerant from 4 to 1 in evaporator from the storage space. So refrigeration effect is 4/7 means H1 minus H4. H4. H1 minus H4. But H4, H3 are same. Throttling है तो enthalpy same रहेगा. H1 minus H4. But H4 is also H3 because 3 to 4 is throttling. So this is the equation. चलो. Now let's calculate the mass flow rate, sir. Let's calculate the mass flow rate. मित्रों, देखो. So RC is 0.15 is kilowatt में है तो किलोजूल पर के देखो this is in kilowatt is kilojoule per second. Mass flow rate into these enthalpies are in kilojoule per kg. So kilojoule गया तो m dot is kg per second. So kg per second में आएगा. M dot is not known into H1 minus H3. What is H1? Lower pressure Hg. H1 is lower pressure Hg. I think it is 183 minus H3. What is H3? Higher pressure or higher temperature HF. Higher temperature HF. HF is, this is HF 74.5. So can you give me the mass flow rate in kg per second? Anyone? I don't know whether you remember or not. I derived one equation, मतलब in fact दो equation दिया हूं sir volumetric efficiency. 1 plus C minus C P2 by P1 whole power 1 by n, or the other equation is for volumetric efficiencies I have given the actual volume is m dot V1 by swept volume pi by 4 d square ln k. When the number of cylinders are not given, I'll take it as 1. इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला है तो k is taken as 1. एंड आप बताइए क्या आप एक मिस्टेक कर सकते सर? Because as the mass flow rate is kg per second, this should also be per second. लेकिन ये rotation per minute है, so I divide with 60. When I divide with 60, it will be rotation per second. Second में, because meter per second में, if this is kg per minute, it will be rotation per minute. But this is already kg per second, so इसको भी second में convert करना. Per minute means 60 second. अब हो गया. And you know very well, my dear students, all these equations. And what is this known as, sir? This is nothing but your piston displacement volume or swept volume pi by 4 d square ln. So therefore, now I'll write this as the volumetric efficiency is equal to m dot. What is V1, sir? It is the specific volume of the refrigerant which is actually entering the compressor. So actually volumetric efficiency is nothing but breathing capacity of the compressor. कितना अंदर आ रहा है और actually कितना आना चाहिए. Okay, right. So therefore, now by pi by 4 d square L is Vs into n by 60. This 60 will go to the top. ये 60 ऊपर जाएगा. So already the volumetric efficiency is given to us. How much is the volumetric efficiency given, sir? 0.8. So the volumetric efficiency is 0.8. M dot अभी calculate किए. 1 point, what is the value of M dot? 1.3825 into 10 power minus 3. And what is V1, sir? What is V1? V1 is specific volume at the inlet to the compressor. What does V1 mean? Low temperature VG. This is देखो low temperature VG. Low temperature VG specific volume 0.08. Excellent, sir. 0.08. तो V1 कहाँ गया रे? 0.08. This is 0.08.
डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, आई डू नॉट नो, लेकिन इंटू 60 भी है सर, इंटू 60, m dot v1 into 60 swept volume into rpm is given as 720. तो यहां से I'll calculate vs, which is nothing but 1.3825 into 10 raised to minus 3 into 0.08 into 60 divided by 720 into 0.8. So therefore, अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? Anyone with swept volume, that will be in meter cube per second. Anyone? Anyone? 1.15 into 10 power. Yesh has given the right answer. So many meter cube. ये तो मीटर क्यूब आना पर सेकंड, ये हो गया. This is the meter cube because we have calculated pi vs. What is vs? Pi by 4 d square l. D square l means meter cube. लेकिन क्वेश्चन में पूछा है द स्वेप्ट वॉल्यूम इज डैश इनटू 10 पावर माइनस 5 मीटर क्यूब बोला है. सो व्हाट इज द फिल इन द ब्लैंक? तो आपको सिर्फ यही सबमिट करना है सर. 1.152. यू शुड सबमिट ओनली 1.152. यस, यहां पे अरे यार ये वेरी गुड सर. इज इट क्लियर? क्लैरिटी आया सर बच्चों को? हो गया सर, हो गया. सो 20, अभी 8 क्वेश्चन है सर. विल कंप्लीट, डोंट वरी. हो गया सर, हो गया. ये करो, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट. क्वेश्चन नंबर 20. ये 20 है, 21 है. ये मेक इट फास्ट. फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना. हाँ. In a 5 kilowatt cooling capacity means the refrigeration capacity RC is 5 kilowatt. Operates on a simple V cycle. The refrigerant enters the evaporator. Let me draw the cycle on TS diagram. Right. हाँ. The refrigerant enters the evaporator. देखो देखो. This is entry to the evaporator. This is exit of evaporator. So it is entering the evaporator. The refrigerant enters the evaporator at 75 and leaves with an enthalpy. It is entering at 4, leaving at 1. So it is leaving at 183. Am I right, sir? It is entering the evaporator. This is entry to the evaporator, exit. Entry is 75 and exit is 183. The enthalpy of the refrigerant after compression. Compression के बाद ये होगा आपका 210. Which of the following statements is correct? What is the COP of the cycle, sir? आप बताइए. Refrigeration effect. H1 minus H4 by H2 minus H1. I repeat, sir. COP is refrigeration rate. H1 minus H4 by H2 minus H1. So therefore, the COP is equal to H1 is 183 minus H4 is 75 by H2 is 210 minus H1 is 183. So कितना आ रहा है सर? So we are getting COP as for, I think COP of the cycle is for first one is correct. The power input to the compressor, the heat transfer in the condenser, the power input to the compressor. कैसे calculate करेंगे sir power input to the compressor? देखो देखो. So the power input to the compressor is mass flow rate into work input to the compressor. Correct. So the power input is equal to mass flow rate. What is the work input to the compressor?
1 to 2 is compressor, that is H2 minus H1 applying steady flow energy equation. So there is no problem with H2, there is no problem with H1, there is a problem with mass flow rate. So how can I calculate mass flow rate? यहाँ पे कुछ information दिया sir. RC can be written as mass flow rate into RA. So RC can be written as mass flow rate. What is RE? RA, it is H1 minus H4. Absolutely fine. So therefore, my dear students, what is RC, sir? What is RC? It is 5 kilowatt, kilojoule per kg, तो kg per second में आएगा, into H1 minus H4. H1 is 183 and H4 is 75. So what will be the mass flow rate, sir? Anyone with mass flow rate? Is the mass flow rate correct, sir? I think correct, na? 0.0 is the mass flow rate correct? 0.0 4629, correct, correct. So अब यहाँ पे put करो sir. The power input to the compressor is m dot 0.0463 H2 minus H1. अरे इतने पागल है सर. ऑलरेडी क्या पागल है सर. देर इज नो नीड टू फाइंड आउट सर मास फ्लो रेट. चलो कर दिए. नो नीड टू फाइंड आउट. हम पागल हो गए सर. H2 minus H1. H2 is 210 and H1 is 183. तो कितना आ रहा है सर? 1.25. How can I find by other way? आराम से कर सकते सर. 1.25 आराम से. कैसे? COP is equal to RC by power input. Already we calculated COP as 4. RC is 5 and power input. कितना simple है सर. But why I have done this, you know, sometimes he may be asking the mass flow rate. इसलिए किया हूं. Don't think that I am a fool. I know I am a fool. 1.25 kilowatt. Absolutely fine. तो ये भी सही है सर. एक सेकंड. The power input to the compressor is 4.6. गलत. The power input to the compressor, yes, सही है. The rate of heat transfer at the condenser. मतलब ये heat पूछा है सर, ये heat. How much is the heat ejected in heat rejection? आप जानते हैं सर. एक बार लाइन डायग्राम ड्रॉ करना सर. Okay, मैं दो तरीके बताऊंगा सर. I'll teach you two ways. Again, two ways. So the heat rejected in the condenser is यहां से यहां तक. But he's asking in kilowatt. तो क्या करेंगे? Actually, it will be H2 minus H3. सो अगर रेट पूछता है तो मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना. मास फ्लो रेट इट्स अ स्टेडी स्टेट, तो मास फ्लो रेट हर जगह सेम रहता है. तो क्यू आर विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट इज 0.0463 into H2 minus H3. H2 minus H3. Already H2 is 210 and H3. What is the relationship between H3 and H4? They are same. So H2 is 210 and H3 is same as H4. Throttling. This को H3 भी लिख सकते हैं सर. This को H3. So it will be 210 minus 75. How much is this, sir? 0.0463 into 210 minus 75. 6.25. The same thing can also be done in a simple sweet way. देखो, the same thing can also be done in a simple sweet way. देखो एक बार. So if you see the cycle, देखो एक बार. सो व्हाट इज द, दिस इज द स्टोरेज से हीट ले रहा है इवेपोरेटर. ये हीट कहां जा रहा है? ये कंडेंसर हीट सर. दिस द कंडेंसर हीट, दिस द इवेपोरेटर हीट. सो व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी? 5 किलोवाट. What is the power input, sir? The power input is 1.25. So this is entering, this is entering. If I apply the energy balance, so 1.25 is entering plus 5 is also this entering this. So condenser heat, this is the condenser heat. मतलब surroundings को reject करने का. It will be 6.25. Again, it is the same. Is it okay, sir? Same. आया सर? खुश हो कि नहीं? खुशियां दी बंदा खुश हो कि नहीं? So एक बार देखते हैं सर. The rate of heat transfer at the condenser is 6.5. That is also correct. So A, C, D are the right answers. ये करो.
फटाफट करो रे। गुड गुड गुड। अच्छा लग रहा है सर। हो गया सर। 22 अभी 6 क्वेश्चन है, विल कंप्लीट। द टेम्परेचर लिमिट्स, एक सेकंड आर 25 इफ द गैस इज ड्राई। ओ हो सवाल यह है, इफ द रेफ्रिजरेंट इज dry saturated at the end of compression. Okay. Let me draw. Correct? Yes. कैसे ये सही है सर? द रेफ्रिजरेंट इज ड्राई सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद, तो ये फिगर सही है सर। यस, वन इज इन वेट रीजन, यू आर राइट मिस्टर मोहम्मद फैजी। अब क्वेश्चन करेंगे सर। दिस टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड and the condenser pressure temperature is 25 degree centigrade. ठीक है सर। ओके, 25 पे HF, 25 पे HF, this enthalpy 25 degree HF, so this enthalpy is equal to 298.9. and H2, what is H2 sir? 25 Hg, 25 Hg, oh हो HFG दिया है सर, HFG दिया है सर, प्लीज लेटेंट हीट दिया है सर। देखो, कैन आई राइट लेटेंट हीट इज इक्वल टू, मित्रों, एच जी माइनस एच एफ। यस, किस टेम्परेचर पे? हाइयर टेम्परेचर पे, हाइयर 25। सो देयरफॉर एच जी विल बी इक्वल टू एच एफ प्लस लेटेंट हीट। तो एच जी इज इक्वल टू, व्हाट इज एच एफ सर? इट इज 298.9 प्लस लेटेंट हीट इज 1166.94। कंफ्यूज मत होना सर, अच्छा खासा क्वेश्चन है सर, दिस इज अ गुड क्वेश्चन सर। व्हाट इज एच जी? देखते, जरूरी नहीं है लेकिन 1465.84। हाँ, ये शायद सबको क्लियर हो गया है सर। नेक्स्ट, लिक्विड एंट्रोपी इज गिवन, तो ये वाला दिया है सर, S3 दिया है सर। S3 क्या, कहां लिखेंगे? S3 दिया है सर, लिक्विड एंट्रोपी, लिक्विड एंट्रोपी इज गिवन। देखो, हाइयर टेम्परेचर लिक्विड एंट्रोपी मींस हाइयर टेम्परेचर, दिस इज लिक्विड, तो S3 इज गिवन 1.1242। ठीक है सर जी, इसको इरेज करेंगे सर। ओके, 10 -10 पे लिक्विड एंथैल्पी इज गिवन, इधर देखो, कितना दिया सर? -10 पे 135.37। क्या एच जी दिया है सर? नहीं दिया। देखो, अगेन डेल्टा एच दिया है सर, तो एच जी माइनस एच एफ इज इक्वल टू लेटेंट हीट, तो 1297.68 लोअर टेम्परेचर पे, सो एच जी विल बी इक्वल टू एच एफ प्लस 1297.68। सो एच जी विल बी इक्वल टू एच एफ, लोअर का एच एफ है 135.37 प्लस 1297.68। 1433.05। क्या ये सही है गलत है सर? आर दीज वैल्यूज करेक्ट और रॉन्ग सर? सब लोग बोलो एक बार, आर दीज वैल्यूज करेक्ट और रॉन्ग?
आर दिस, ये सही है सर, एक बार देखता हूँ, शुड बी करेक्ट आई थिंक 13। हाँ बिल्कुल सही है सर। एंड लिक्विड एंट्रोपी इज ऑल्सो गिवन, सो एट पॉइंट, ये एंट्रोपी दिया है सर, दिस एंट्रोपी, सो यहाँ का एस एफ दिया है सर, यहाँ का एस एफ, यहाँ का एस एफ, लोअर एस एफ, लोअर टेम्परेचर एस एफ 0.5443। ठीक है, ये S3 इधर ही लिख देंगे सर, यहाँ का S3 इधर लिख देंगे, तो S3 इज 1.1242। Okay, is the question clear now? ये कौन है रे, इतनी बार ये कर रहा है, पता नहीं यार, वेट करो थोड़ा, नहीं डिस्टर्ब मत करना बेटा, लेट मी कंप्लीट। आप अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं चलता सर, सो मुझे कुछ डिसिप्लिन चाहिए सर। हाँ देखो, यहां तक, हाँ जब भी आपको कुछ फ्री चाहिए, इट विल बी एट माई कन्वीनियंस, पक्का। जब भी आपको कुछ मुफ्त में चाहिए, मुफ्त में आपके कन्वीनियंस से नहीं होता सर, तो आई डोंट बिलीव इन मुफ्त रेवड़ी। तो अब अगर ये तो मुफ्ती है, लेकिन जस्ट बिकॉज एक सपोर्ट के लिए कर रहा हूं सर। तो ये देखो, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो यू कम टू आवर प्लेटफॉर्म, आई विल टीच यू। ओके, एक बार मैसेज किए तो ठीक लगेगा सर, लेकिन ये गलत है सर। एक बार बोले तो देख लिया मैं, ओके, क्योंकि जब मैं क्लास पढ़ाता हूं सर, मैं ये सब नहीं देखता हूं सर, मेरा फोकस पूरा यही है। ओके राइट, प्लीज। हाँ अब क्या करें सर, व्हाट इज ही आस्किंग, सीओपी ऑफ द साइकिल कैसे करेंगे सर? फर्स्ट यू राइट द इक्वेशन ऑफ सीओपी, सीओपी इज इक्वल टू H1 minus H4, this is the refrigeration effect, H1 minus H4 by H2 minus H1, excellent sir, H2 minus H1। ओके, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, देखो सर जी, आई थिंक मुझे H3H4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, H3H4, बिकॉज H3H4 इज सेम। देखो H3H4 इज सेम, दिस इज ऑल्सो H4 सर, क्यों? क्योंकि 3 to 4 इज थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग में एंथैल्पी सेम होता है सर, थ्रॉटलिंग में एंथैल्पी सेम होता है, सो 3 4, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज H1 minus H4 is also H3, H4 H3 are same by H2 minus H1। तो कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है सर, आप बताइए कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है? बाईपास फैक्टर के क्वेश्चंस एक्चुअली ईएस के लिए इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है विजय, दे डोंट गेट में नहीं पूछते, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा क्या होता है। ओके राइट, डोंट वरी, डोंट वरी, आई डू इट सर, एक सेकंड, आई डू इट, डोंट वरी, लास्ट में याद दिला देना। ओके देखो ये है, तो H3 अवेलेबल है, H2 अवेलेबल है, H1 अवेलेबल नहीं है, तो हाउ डू आई कैलकुलेट H1? तो इट इज इन वेट रीजन, H1 इज इक्वल टू HF प्लस X इंटू HG माइनस HF, एब्सोल्युटली फाइन। तो H1 is equal to what is HF sir? H1 HF is 135.37 plus X into Hg minus HF। ऑलरेडी Hg minus HF is latent heat, ऑलरेडी वो है, फिर भी ऑलरेडी Hg minus HF डायरेक्टली दिया, लो टेम्परेचर पे Hg minus HF 1297.68 दिया है, फिर भी मैं Hg minus HF लिखता हूं, हम मूर्ख है इसलिए आपके लिए लिख रहे हैं, माइनस ये है 135.37। सो अब मुझे x चाहिए, कैन यू हेल्प मी विथ x? एनीवन, कैन यू हेल्प मी विथ H1? क्या 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 H1 में क्या है रे H1? हाँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x चाहिए, S1 is equal to S2 because 1 to 2 is isentropic, तो ऑलरेडी S2, देखो S2 दिया है नहीं दिया है सर, यही तो प्रॉब्लम है सर इस क्वेश्चन में, S2 is not known, can anyone tell me as to how to calculate S2? देखो एक बार मैं क्लास में पढ़ाया था, S2 is nothing but Sg,
S2 is nothing but Sg. देखो, Sg minus Sf is equal to latent heat by temperature. This temperature should be in Kelvin. ये powerful equation है सर, ये powerful equation है, ठीक है. So Sg minus Sf, what is latent heat? Latent heat is nothing but Hg minus Hf. So ये हो गया सर. ये कहाँ क्या कैलकुलेट कर रहा है? इधर देखो सर. I want S2. S2 is, this is S2. This is S2. अब हायर टेम्परेचर पे है सर. S2 is Sg minus Sf. What is Sf? S3. S3. S3 already is given 1.1242. I repeat sir. ये बहुत पावरफुल इक्वेशन है. Sg minus Sf is LH by T. LH is Hg minus Sf by T. So therefore we are at higher temperature. S2 ये higher temperature है. S2 minus Sf. Sf is S3. But already Sf is known. कितना है सर? 1.1242 is equal to Hg minus Sf. ये किधर का Sg minus Sf सर? ये higher temperature. So at 25 degrees centigrade, at 25 degrees centigrade, the latent heat is 25 degrees centigrade. The HFG is 1166.94. 1166.94. 1166.94 and the higher temperature, it should be in Kelvin. What is the higher temperature? 25 degree. So it will be 298. किसी को समझ में आ रहा है सर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. ये मतलब ऑल वेराइटीज, पॉसिबल वेराइटीज आई एम इंक्लूडिंग सर. सारे पॉसिबल वेराइटीज मैं इंक्लूड कर रहा हूं सर, ठीक है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2? .04. S2 आ गया सर. एक बार अगर S2 आ गया, once S2 is known, there is no problem sir. Once S2 is known, S2 आ गया सर. S1 is S2. S2 is 5.04. Now, so what will be S1 sir? It is in the wet region. एक बार देखो सर, S1 is in the wet region. So this can be written as SF plus X into Sg minus Sf. And S1 can be written as Sf plus X into, what is Sg minus Sf? Latent heat by temperature. But latent heat can be written as HFG. देखो, Sg minus Sf is LH by T. LH को लिखेंगे HFG by temperature. But all these I am calculating at 1. 1 is nothing but lower temperature. 1 is nothing but lower temperature. All these values should be at lower temperature. So S1 is already known, sir. S1 is already known 5.04 because S1 S2 are same. SF. Which SF, sir? We are at the lower temperature. 1 is at the lower temperature. SF. SF at lower temperature is 0.5443. 0.5443 plus X into HFG. What is HFG at the lower temperature? At the lower temperature, HFG is 1297.68. 1297.68 by lower temperature. What is the lower temperature, sir? The lower temperature is -10. उसको केल्विन में रखो सर. उसको केल्विन में रखो. It will be 263. Anyone got the value of? गलत किए सर हम. हाँ राइट, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन था ना सर? हाँ. सो अब देखो, व्हाट इज H1? H1 is equal to 135.37 plus X is 0.91. So 1433.05 minus 135.37. तो अब बताइए what is this? यस. अब क्या है सर? सीओपी कैलकुलेट करेंगे. 1317.76, 1317.36 पुट करो. H1 minus H4. H1 is, what is H1 sir?
1317.76. हाँ, H1 कहाँ गया? -H4. व्हाट इज H4 सर? हाँ है रे. व्हाट इज H4? इधर देखो. व्हाट इज H4? H4 is same as H3 because throttling. So H3 is 298.9. देखो, H1 minus H4 is H3 by H2 minus H1. By H2 minus H1. H2. Already H2 is 1465.84. 1465.84 minus H1. Na? Already H1 is known. 1317.36. H1, right. So please give the value of all of you. Are you getting, sirs? सभी को आ रहा है सर? क्या 76 नॉट 36? कहां पे? जो भी है रे, मुझे ये वैल्यू आया. डेसिमल के बाद उतना फर्क पड़ेगा क्या? आप बोल रहे डेसिमल के बाद नहीं है ना? अच्छा 76 ये बोल रहे हैं. अच्छा, माय बैड, माय बैड, माय बैड. सवाल अच्छा था सर. इट वाज अ क्लास क्वेश्चन. अग्रीड. एक से बढ़कर एक सर. टेरिफिक, टेरिफिक सर. टेरिफिक सर. टेरिफिक क्वेश्चन. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम क्योंकि आपको एग्जाम को भी जाना है. ओ माय गॉड. ये करो. A steam power cycle with regeneration is shown in the TS diagram. It employs single open feed water heater for efficiency improvement. The fluids mix with each other in an open feed water heater. The turbine is isentropic and input to the feed water heater and the input from the feed water is at state to. अच्छा, मतलब यहां से कुछ स्टीम को we have bled off, मतलब कुछ स्टीम चुरा लिए. Okay, the pump work is negligible and he has given the mass flow rate of steam blade from the turbine as a percentage of total flow rate at the inlet. अच्छा, कितना चुरा लिए? फ्रैक्शन पूछा है सर. एक बार डायग्राम देखो, बहुत सिंपल है सर. एक्चुअली लेट 1 kg एंटर. तो 1 kg एंटर होने के बाद यहां पे y फ्रैक्शन ले लिए. तो 1 माइनस, इधर देखो ध्यान से सुनो, यहां कंप्लीट 1 kg आ रहा है सर, मान लो. तो यहां पे y फ्रैक्शन चुरा लिए. अब यहां पे कितना होगा सर? 1 माइनस 5. तो अब ये देखो, यहां, यहां और यहां 2 और 4 मिक्स कर रहे हैं हम, सो दैट आपको 5 मिल रहा है. ध्यान से सुनो सर. देखो ये सब थ्योरी अभी तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूं सर. देखो एक बार, यहां से फ्रॉम द स्टेट टू y फ्रैक्शन, इस स्टेट पे y फ्रैक्शन आ रहा है. तो यहां देखो 1 माइनस वाई फ्रैक्शन इज कमिंग एट स्टेट 4. देखो 2 और 4 को मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट इज 5. तो ये भी अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, और रिजल्टेंट ऐड करो, y प्लस 1 माइनस वाई इज 1 kg. सो 1 kg इज कमिंग एट स्टेट 5. नहीं आ रहा सर आपको समझ में? लेट मी एक्सप्लेन सर. लेट अस टेक y फ्रैक्शन फ्रॉम हियर. y लेने के बाद 1 माइनस वाई बचा है सर. तो एक्चुअली ये और ये मिक्स करते हैं. When we mix these two, you get the resultant. If you see my theory, you will understand everything clearly. Is it clear, sir? अगर मेरा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा. तो अभी मैं, मुझे ना वो पूरा पढ़ाने के लिए टाइम लगता है सर, विच आई टीच इन रेगुलर क्लास. सो ये और ये मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट ये है.
So y fraction at state 2 is mixed with 1 minus y at state 4. दोनों mix करने के बाद y plus 1 minus y is 1. 1 kg is coming at state 5. तो conservation of energy लिखना. So if I write the conservation of energy to this open feed water heater, what is open feed water heater? It is a direct contact heat exchanger. Steam आ रहा है, liquid आ रहा है, water आ रहा है, दोनों को mix कर रहा है. Okay, तो H1, M1 H1, तो y into H2, अरे ये मास है M1 H1, दे अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, प्लस 1 minus y into H4. देखो y is in M1 H1 plus M2 H2 is equal to M3. What is the mass here? Y 1 minus y कितना है सर? 1 at state 5. So it is 1 into H5. Is the conservation of energy equation clear? वो पूछ रहा है सर, y value पूछ रहा है सर. He's just asking y value. Okay, how much fraction is taken out of the total mass entering here? कितना fraction चुरा लिए? तो y value पूछ रहा है. Y into H2. All values are given sir. इधर देखो H1, देखो एंथैल्पी, देखो मित्रों एंथैल्पी H1, H2, H3, H4, H5, H6. ओके, पुट करो. क्या पुट करना सर? हाँ, H2. What is H2 सर? 3000 plus 1 minus y H4. What is H? अरे यार, what is H4? 200. H4 is 200 is equal to 1 into H5. What is H5 sir? H5 is 900. So H5 is 900. Put करो. थ्री है 1000 से 200 निकालना, so 2800. ये उधर जाएगा 700. तो y is equal to 700 by 2800, which is 1 by 4. This is 0.25, which is nothing but 25% is the right answer. Is the answer clear sir? Next question था सर ये भी. क्या बोलूं बच्चों को, कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा है, इनको मैं क्या करूं? मुश्किल है सर. ये करो. थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है सर ये. अब वॉट एवर द क्वेश्चंस आर कमिंग, थोड़ा हाई लेवल के है सर. कितने हैं सर? 24, 25, 26, 27. हाँ, yes, 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 Mrigraj. This is one of the best questions, sir. Salute to this question. बिना वेस्ट किए पढ़ेंगे सर. The air fuel ratio in a gas turbine whose turbine and the turbine efficiency, first turbine दिया, उसके बाद में compressor दिया. Turbine and compressor. Turbine is 85 and the compressor is 80, means 0.8. Okay. The maximum temperature of the cycle T3 is maximum temperature. So मैं draw करके दिखाऊंगा सर. 875, 273 ऐड करना सर. I've added sir 875 plus 273, 1142 का. The working fluid is ideal gas and of course ये गामा है सर. सी एक बार देखना 1.005 नहीं है, 1 है सर. Okay, which enters the compressor at 1 atm and the temperature is 27 degrees centigrade, which is 300 Kelvin. The pressure ratio is 4. The fuel has the calorific value of 42. मस्त क्वेश्चन है सर ये, क्योंकि बहुत दिन पहले ये क्वेश्चन आया था सर, बहुत दिन पहले. 42,000. There is a loss of 10% of calorific value in the combustion chamber. सर आप रेस्पेक्ट दो सर इस क्वेश्चन को.
आप इस क्वेश्चन को रेस्पेक्ट दो सर. Read. There is a loss of 10% of the calorific value in the combustion chamber. Assume closed system, closed combustion chamber, that is mass of fuel and air do not mix. वो एयर एक बार आई रिक्वेस्ट एवरीवन जस्ट रीड द क्वेश्चन. कुछ मत करना सर, आप डोंट डू एनीथिंग, आप क्वेश्चन को पढ़ो सर. देखो आप 2:30 को ही नहीं दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं. आप 4 बजे भी दे सकते, आप 5 बजे भी दे सकते सर. बट इट शुड बी, द टेस्ट शुड बी टेकन टुडे इटसेल्फ. कम ऑन, कम ऑन. हाँ, द रिक्वायर्ड एयर फ्यूल रेशियो पूछा है. एक्चुअली क्वेश्चन को समझो सर, आप प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मैं बताता हूं क्या खतरनाक क्वेश्चन है सर. सारा डेटा ले लिए सर. Okay, let me take it as 1 with why are you showing like this sir? Because isentropic efficiencies are given. अब ये मत लिखना प्रोडक्ट T2 T4 इज इक्वल टू T23, गलत है सर. वो केवल आइसेंट्रोपिक, हाँ ऐसे लिख सकते. इधर देखो, T2s into T4s can be written as T1 T3. ये आइसेंट्रोपिक है, ये आइसेंट्रोपिक है. देखो देखो देखो, T1 into T3 can be written as product of what, even T2s into T4s. लेकिन आप T1 T3 cannot be written as T2 into T4 क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक है, ये आइसेंट्रोपिक है. समझ में आ रहा सर? ओपी अंडरस्टूड सर. तो अब कभी भी याद रखना, always remember that whether it is a gas turbine cycle or gas refrigeration cycle, always try to calculate temperatures. Once temperatures are calculated, next will be very easy sir. Let me tell you, देखो एक बार, T1 is already given. I cannot apply T2 by T1 is equal to P2s by P1 gamma minus 1 by gamma. No, I can apply for this. I can apply for this. इधर देखो, T2s by T1 is, my actual points are 1, 2, 3, 4. These are the actual points, sir. These are not actual points. Okay. T2s by T1 is equal to P2s by P1. P2s by P1, which I can write it as RP. P2s by T1 is P2s by P1. This is the pressure ratio. Gamma minus 1 by gamma. Okay. T2s by T1. Already T1 is known. What is T1, sir? 300. And the pressure ratio is given as, what is the pressure ratio given, sir? 4, 4, 4. 4 power. Gamma is 1.4 minus 1 by 1.4. थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करके मुझे T2s का वैल्यू बता दीजिए सर. नाउ एवरीथिंग इज इन योर हैंड सर. बहुत बढ़िया. इतना जल्दी कैलकुलेट किए. पहले आपके पास एक क्वेश्चन था क्या मिस्टर अर्पित?
आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू, अर्पित आप इतना जल्दी कैलकुलेट किए, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इज आइसेंट्रोपिक वर्क बाय एक्चुअल वर्क. What is the isentropic efficiency of the compressor given? 0.8. T2s is 445.8 minus T1 is 300 by T2 minus T1 is 300. Arpit, wonderful beta. God bless you. God bless you, beta. God bless you. So is the value of T2 correct, sir? देखो अभी कैलकुलेट किए, T2 का वैल्यू कैलकुलेट किए, 482.2 केल्विन इज द राइट आंसर. अब इधर आइए सर, बहुत बढ़िया बेटा. T3 by T4s इज इक्वल टू T3 by T4s, इसको अप्लाई करो, RP power gamma minus 1 by gamma. T3 is already given, that is 1148 by T4s मुझे पता नहीं है, RP is 4 power gamma is gamma minus 1, 1.4 minus 1 by 1.4. तो आप बताइए what is T4s? T4s आ गया. So what is the turbine expansion? Turbine is T3 minus T4 by the actual work by isentropic work. दोबारा बता रहा हूं, the isentropic efficiency of turbine is actual by isentropic, T3 minus T4 by T3 minus T4s. So what is the turbine efficiency given? 0.85. 0.85 is equal to T3 is 1148 minus T4 by 1148 minus T4s is 772.55. ठीक है सर. T4 सही है सर. थैंक यू बेटा, थैंक यू. Is the value correct है? तो T4 is 825.8. So all temperatures हम कैलकुलेट किए सर. T4 is 825.8. ठीक है, ये सारे आ गए सर. So all four temperatures are clear. T1, T2, T3, T4. अब देखो एक काम करता हूं सर, I'll do one thing. थोड़ा ये इरेज कर देता हूं सर, अननेसेसरली थिंग्स जरूरी नहीं है. एनीवे वी हैव कैलकुलेटेड ना, इसको थोड़ा विल रिमूव दिस सर. लेट मी इरेज सर. ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, यू नो हाउ टू कैलकुलेट टेम्परेचर्स, तो ये आ गया सर. अब देखो नाउ अब देखो व्हाट इज द आस्किंग. क्लियरली ही सेड, बहुत अच्छा सवाल है सर. अब देखो क्लियरली क्लियरली इतना प्यारा सा, प्लीज सुनिए सर, प्लीज सुनिए. ही सेड दैट, एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में. व्हाट इज दैट सेंटेंस? वो सब छोड़ दो. Assume closed system combustion chamber, that is mass of fuel and air do not mix. अच्छा, इधर देखो सर. तो आप बोल रहे एयर फ्यूल बिना मिक्सिंग के कंबशन कैसा होगा? वो नहीं सर, कॉन्सेप्ट वो नहीं है. हमारे गैस टर्बाइन में जो एयर वर्किंग फ्लूइड है ना, द वर्किंग फ्लूइड इन आवर गैस टर्बाइन एयर, दैट एयर इज नॉट मिक्सिंग विद द फ्यूल. तो क्या है ये? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर. मतलब 2 से लेकर 3 तक जो भी हीट सप्लाई हो रहा है, इट्स समथिंग लाइक दिस. यहां पे फ्यूल इज बर्न्ड, फ्यूल इज बर्न्ड. व्हेन द फ्यूल इज बर्न्ड,
इट इज सप्लाइंग हीट टू आवर फ्लूइड। तो हमारा एयर किस पॉइंट पे एंटर हो रहा है? दिस इज एयर। तो बाहर फ्यूल बर्न हो रहा है, बाहर फ्यूल बर्न हो रहा है, ये एयर अंदर आ रहा है। किस पॉइंट पे अंदर आ रहा है सर? 2 पे। और हीट लेके 3 पे बाहर जा रहा है सर। हीट हीट लेके देखो, देर इज नो मिक्सिंग, जस्ट ट्यूब है, ट्यूब में से बाहर से हीट सप्लाई हो रहा है, मतलब फ्यूल बर्न होकर हीट दे रहा है, और एयर देर इज नो कॉन्टैक्ट, क्लोज है। समझ में आया सर? कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? से समथिंग बॉस, होप यू अंडरस्टूड। यही तो बोला है सर, बाहर इट इज एक्सटर्नल कंबशन सर। सो समझ में आ रहा है? इट्स क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन। इन क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन फ्यूल इज बर्न समवेयर, इट विल ओनली सप्लाई हीट। फ्यूल कहीं बर्न हुआ, वो सिर्फ हीट सप्लाई कर रहा है। वेरी गुड। अब एनर्जी बैलेंस लिखो सर। अब एनर्जी बैलेंस, ये हीट अंदर आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, एंट्री प्लस एंट्री शुड बी इक्वल टू एग्जिट। ये पूरा एयर है सर, ये पूरा एयर है सर। देखो, air energy at inlet plus fuel energy should be equal to exit energy. अब देखो, what is air energy? Mass of air, air का तो mass change नहीं हो रहा, mass of air into H2, okay, plus ये बर्न हो रहा है सर, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है सर, इट इज नॉट रिलीजिंग 100% एनर्जी, 10% इज लॉस। तो हाउ मच एनर्जी? जो भी टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्चुअल एनर्जी जो रिलीज कर रहा है उसी के कारण बढ़ रहा है। 100% एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है। अगर 100% रिलीज कर, इफ इट रिलीजेस 100%, द टेम्परेचर एट द एग्जिट विल बी मोर, बट इट इज रिलीजिंग ओनली 90%, 10% is lost. So therefore, multiply this with 0.9. That should be equal to this energy is entering, this energy is entering should be equal to this leaving energy. So air बाहर जा रहा है सर, एयर अंदर आ रहा है, एयर बाहर जा रहा है, तो मास ऑफ एयर इनटू H3। इज द इक्वेशन क्लियर सर? यस, कंबशन, यस अर्पित, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे तो कंबशन एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना। सो मास ऑफ फ्यूल, ये सब ईएस में बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट थिंक दैट गेट में नहीं, गेट में आएगा ही। सो ये कंबशन एफिशिएंसी, दिस द कंबशन एफिशिएंसी, एब्सोल्युटली। तो नाउ ही इज आस्किंग एयर फ्यूल रेशियो, तो कुछ मत करना सर, एम ए बाई एम एफ, दोनों तरफ एम एफ से डिवाइड करना, एम ए बाई एम एफ इन दोनों तरफ एम एफ एम एफ एम एफ से डिवाइड करना। तो एम ए बाई एम एफ एच टू इज CpT2 प्लस एम एफ से डिवाइड किए CV इंटू 0.9 इज इक्वल टू, यू आर डिवाइडेड विथ एम एफ, तो एम ए बाई एम एफ इंटू एम एफ से डिवाइड करो, एम एफ से डिवाइड करो, एम एफ से डिवाइड करो। सो ओके, सो H3 इज CpT3। एक्सेलेंट सर, ये हो गया सर। अब देखो नाउ, MA by MF, what is CP given sir? CP दिया क्या? Somewhere CP दिया है 1 किलोजूल पर kg per Kelvin. CP is given as 1. CP is given as 1. So 1 into T2. What is T2 sir? All temperatures are already calculated. T2 is 482.2. 482.2. Plus the calorific value is 42,000. अच्छा क्वेश्चन है सर। MA by NF, CP is 1, T2 already calculated, C calorific value is 42,000 into 0.9 is equal to MA by MF, and CP is 1 and T3 already, T3 is known to me 1148 कुछ है सर, T3 is 1148, so this is 1148। खतरनाक क्वेश्चन है सर। अब एयर फ्यूल रेशियो कैलकुलेट करना। लेट अस टेक एयर फ्यूल रेशियो को हम x मानेंगे, तो x मानेंगे सर, let MA by MF is equal to X. So X into 482.2 plus 42,000 into 0.9 is equal to, इसको X मानेंगे, X into 1148. So therefore क्या करेंगे, X को कैलकुलेट करेंगे। I am getting X as 56.77, that is mass of air to mass of fuel. इज इट नॉट अ गुड क्वेश्चन सर? कल अगर यही क्वेश्चन आया तो आप खेल खेल लेंगे सर। मतलब कॉन्सेप्ट दिया सर, आई एम नॉट सेइंग यू विल गेट द सेम क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट इजी लाइफ, टफ इज ऑलवेज गुड। मस्त क्वेश्चन था सर, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर, अब दूसरे तरफ जाएंगे।
ओ गॉड, ओ गॉड। हाँ, in a gas turbine plant working on Brayton cycle, a regenerator of 75% effectiveness. The air at the inlet to the compressor is 0.1 megapascal and the temperature at the inlet is 30. 273 plus 30 is 303 Kelvin. The pressure ratio is 6 and the maximum temperature is T3 is maximum 273 plus 90. If the turbine compressor, acha, turbine as well as compressor, someone asked this question, 80%. The percentage increase in efficiency due to regeneration. Acha question hai, sir. Again, a good question, sir. I'll do it, sir. There are two cases in this. First is cycle without regeneration. Second is cycle with regeneration. Let's take case one. अभी कुछ डेटा दिया सर. What is the regenerator efficiency or the effectiveness of regenerator? Did I write all values? देखो, रीजनरेटर का इफेक्टिवनेस दिया है, इनलेट, ओह इनलेट प्रेशर दिया है, इनलेट टेम्परेचर दिया है, प्रेशर रेशियो इज गिवन एज 6 and the maximum temperature is given, the turbine and compressor each has efficiency pointed the percent. Okay, okay. Cycle without regeneration. Okay. फर्स्ट थिंग इज, आप एक काम करो सर, टेम्परेचर्स कैलकुलेट करो सर. फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेट टेम्परेचर्स. थोड़ा फास्ट करो सर. T2s by T1 is RP. What is RP? Physics. Gamma, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं सर. So compressor efficiency is T2s minus T1 by, so therefore compressor efficiency is 0.8. T2s 505.55 minus T1. What is T1, sir? T1. 303. So please give me the value of T2. Is it 556? अरे यार, there is no one in the class. Is the value of T2 correct? करेक्ट है. मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता हूं सर. अरे यार, नो वन इज कमेंटिंग. 56.18. इधर देखो. तो T2 इज कैलकुलेट किए, T2 कैलकुलेट किए 556.18 ना, 0.2.
तो ये हटा देंगे सर. Let me erase this, sir. Similarly, तो क्या मैं अप्लाई माय डियर स्टूडेंट्स एक बार देख लेना सर. T3/T4s इज इक्वल टू आरपी पर गामा में सुमे गामा, वहां से T4s निकालेंगे, लेकिन T4s कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी है सर, बिकॉज दिस इज आइसेंट्रोपिक, दिस इज आइसेंट्रोपिक, तो आई कैन राइट T2s into T4s is equal to T1 T3. Yes, this we can write. आपको ये समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, यू राइट T3/T4s is equal to RP गामा में सुमे गामा. T3 is given, RP is given, तो वहां से T4s निकाल लेंगे, बट दिस द इजीएस्ट वे. T2 अरे T2s तो कैलकुलेट किया सो निकाल दिया सर. हे भगवान, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ T2s? चलो छोड़ दो सर. क्या 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 इक्वेशन रॉन्ग ना, एक्चुअल आइडियल. इक्वेशन रॉन्ग ना, क्या कंप्रेसर के लिए उल्टा होता है ना सर. कंप्रेसर के लिए आइसेंट्रोपिक वर्क बाय एक्चुअल वर्क, टरबाइन के लिए एक्चुअल वर्क बाय आइसेंट्रोपिक. सही है गलत है? सो डिड आई कमिट एनी मिस्टेक सर? चंदन, T2s is 505 ना. हाँ, T2s is 505 into T4s is equal to T1 T3. T1 is 303 and 1173. What is the value of T4s sir? Sir, hope you are understanding sir. बोलो एक बार T4s का वैल्यू बोलो. T4s. So then the turbine efficiency is T3 minus T4 by T3 minus T4s. So what is the turbine efficiency? This is 0.8 is equal to T3. What is T3? 1173 minus T4 by 1173 minus 703.1. मैं इसको इरेज करूंगा सर. हो गया सर, वी आर नियरिंग. सो आप बताइए सर, सो आर दीज वैल्यूज करेक्ट सर? यश ने बोला कुछ वैल्यूज 797 आ रहा है. हाँ राइट, ठीक है. नाउ व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन? Efficiency of the turbine is net without regenerator, net work by heat supply. So what is the net work? Turbine work, that is H3 minus H4 minus compressor work H2 minus H1. This is the net work. I repeat sir, turbine work is H3 minus H4, compressor is 2 minus 1, turbine minus compressor by net work by heat supply. Supply is 2 to 3, therefore H3 minus H2. तो क्या करेंगे सर? तो एफिशिएंसी विदाउट रीजनरेटर, सो कितना होगा सर? CPT3 CPT4 CPT2 CPT1 CPT3 CPT2 CPCP कैंसिल करो, सो इट विल बी T3 minus T4 minus T2 minus T1 by T3 minus T2. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करो सर. Efficiency without regenerator is T3 is 1173 minus T4 is 797.1 minus देखो T2 minus T1 556.2 minus T1 कितना है रे? T1 is 303. T3 minus T2
T3 is 1173 minus T2 is 556.2. कैलकुलेट करो सर. एफिशिएंसी कितना आ रहा है सर? Is the efficiency correct? Yes, 0.199 is correct. Very good, Arpit. Now we'll go to इसका efficiency without regenerator. Without regenerator is 0.199. ठीक है सर. Now we'll go to with regenerator. ये सब निकाल देंगे सर. I'll remove this sir. Now we'll go to with regenerator. देखो देखो एक सेकंड. With regenerator करेंगे सर. तो क्या होगा सर? विथ रीजनरेटर. ध्यान से सुनो सर. आई विल रिमूव दिस सर. एक सेकंड एक सेकंड. ये इसकी कोई जरूरी नहीं है सर, बिकॉज द एक्चुअल प्रोसेस इज दिस. अब इसकी कोई जरूरी नहीं, इसकी कोई जरूरी नहीं सर. दिस द एक्चुअल प्रोसेस. हाँ, रीजनरेटर में क्या हो रहा है सर? रीजनरेटर में कंप्रेसर एग्जिट के बाद, अरे यार, कंप्रेसर एग्जिट के बाद इट एंटर्स रीजनरेटर. मान लो ये एक्स है, इतना रीजनरेशन हुआ, तो ये हीट टरबाइन एग्जिट से जो फ्लूइड आ रहा है उससे लेगा, तो इट विल ड्रॉप डाउन लिटिल बिट. This is the heat gained by our fluid coming from compressor exit in the regenerator, and this is the heat loss. So therefore, what is the effectiveness of heat generator? Ideal gain कहां से कहां gain कर रहा है? 2 से x तक. So it is Tx minus T2. What is the this is the actual gain? Actually it is gaining from 2 to x. Tx minus. Ideally कितना ले सकता सर? 4 minus 2. Ideally वो 4 minus 2 ले सकता सर. नहीं आ रहा सर आपको क्या ये बात? देखो देखो, एक्चुअली इट इज गेनिंग दिस मच, बट आइडियली कंप्रेसर एग्जिट टर्बाइन एग्जिट इतना डिफरेंस ले सकता. आइडियली आइडियली क्या ये बात सबको समझ में आया सर? अरे यार प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? थोड़े लोगों को नहीं आ रहा है सर. इन ए रीजनरेटर इट इज गेनिंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो इट इज लूजिंग. तो इतना तो एक्चुअल गेन हुआ टी एक्स माइनस टी टू. आइडियली कितना होना चाहिए सर? ये एंटर हो रहा है, ये एंटर हो रहा है. देखो टर्बाइन एग्जिट से आ रहा है और ये कंप्रेस. The difference is T4 minus T2. So what is the effectiveness given, sir? 0.75. Tx, I don't know. T2 is already known. What is T2, sir? 556.2 by T4 minus T2. What is T4? 797.1 minus T2 is, what is T2? 556.2. बताइए सर. So this is the value of Tx. आ गया सर. Hope you understood, sir. 666 आ रहा है सर. गलत है क्या? Did we commit any mistake, sir? मैं एक बार चेक कर लेता हूं. सेवन 36 आ रहा है सर. यस इट इज करेक्ट. एफिशिएंसी लिखो. व्हाट इज द एफिशिएंसी सर? देखो देखो, द टरबाइन वर्क, that is net work by heat supply. Now you are not supplying from 2 to 3 unlike case 1. Now you are supplying, क्योंकि ये heat regenerator में आ गया. Now you are supplying only from x to 3. So therefore heat supply will be T3 minus Tx. What is the network by heat supply? Network by heat supply. Network is turbine. Turbine is T3 minus T2. Sorry, T3 minus T4. Minus turbine minus compressor is T2 minus T1. Excellent, sir.
तो आप बताइए सर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सर? T3 is 1173 minus T4 is 797.1. T3 कितना है? क्या गलत कर रहा हूं सर मैं? T3 is 1173 minus T4. So percentage increases. This is second efficiency. With respect to first, what is the increase in efficiency? So it will be 0.2813 minus 0.199 with respect to original into 100. की 1.35%. एक बार मैं चेक कर ले तो आंसर सही है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. इज द आंसर करेक्ट सर? मस्त क्वेश्चन है सर. हो गया सर. अभी दो क्वेश्चंस बचे हैं. लास्ट टू विल स्टॉप. मस्त क्वेश्चन है सर. से समथिंग, से समथिंग. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. नेक्स्ट. ये क्या है सर? ये सिंपल सा क्वेश्चन है सर. लेकिन करना है सर. करेक्ट. अभी एक 15-20 मिनट दे सकते हैं सर आप? कैन यू गिव अनदर 15-20 मिनट्स? कैन यू गिव? कैन यू गिव अनदर? बिकॉज आप जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है सर. हाँ, टेस्ट एक हाफ एन आवर बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, देखो. ए फ्रेयन ए फ्रेयन रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूसर्स कूलिंग इफेक्ट. इसको थोड़ा हाँ. As a cooling effect of 20 kilowatt. It works on a simple BC cycle with pressures given. The vapor leaves the evaporator. The vapor leaves the evaporator dry saturated, and there is no the power required by the compressor is. Acha. It's a simple cycle, sir. This is the leaving point of evaporator as dry saturated, and there is no subcooling or undercooling. Anji sir. Okay. This pressure is 1.509, ये वाला प्रेशर, और ये 9.607. ठीक है. Is the diagram clear? The power required by the compressor. देखो, the power input to the compressor is given by mass flow rate into work input. The work input is 1 to 2, that is H2 minus H1. Absolutely fine. मेरे प्यारे दोस्तों, RC कैन बी रिटर्न एज m डॉट इंटू RE. RE इज 4 से लेकर 1 तक. H1 minus H4. RC is H1 minus H4, but H4 is also equal to H3. ठीक है सर. So therefore RC is 20. Mass flow rate is not known. H1 minus H3. H1 is lower pressure HG. Lower pressure HG. Lower pressure HG
178.61. H3, higher pressure HF, 74.53. फटाफट मास फ्लो रेट बताइए सर, मास फ्लो रेट बताइए। मेहनत करना है सर। मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता हूं सर, आप थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए। यस, सो नाउ mass flow rate is known, H1 is already known. H1, what is H1? H1 is 178.61. H2 is not known because it is not in the on the saturated state, it is in the superheated state. कैसे करें सर, खतरनाक क्वेश्चन सर। इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं सर। देखो एक बार, लेट मी राइट दिस एज 2 डैश। Can I write H2 is equal to H2 dash plus Cp of vapor into T2 minus T2 dash? मैं क्लास में बताया था सर, if you want the superheated enthalpy, it will be saturated vapor enthalpy plus specific heat into difference of temperatures. ये क्लास में बताया था। What is H2 dash सर, एक बार देखो, what is H2 dash? H2 dash is higher pressure Hg, higher pressure Hg, 203.05, 203.05 plus specific heat, higher pressure पे specific heat. So higher पे specific heat is given as specific heat 0.747 and T2 minus T2 dash. T2 dash is the condensing pressure. ये वाला नहीं दिया, ये पूरे values are saturation sir. These are this saturation, this is this saturation, ये saturation, ये जो temperature saturation का दिया है ना higher वाला 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट इन केल्विन, 273 प्लस 40 कितना होगा सर, 313। एंड T2 डैश कंडेंसिंग, ये सैचुरेशन टेम्परेचर, यहाँ पे 40 डिग्री जो है ना, ये वाला नहीं सर, दिस 40 कंडेंसिंग जहां होता है वो सैचुरेशन का, 40 मींस 313। अब सवाल ये है, टू कैलकुलेट द पावर इनपुट आई नीड H2, बट टू कैलकुलेट H2 आई नीड T2। एनीवन एज टू हाउ टू कैलकुलेट T2? T2 कैसे कैलकुलेट करें मैं बताता हूं, सुनो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो सकता है। आई वांट T2। मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी इधर देखो, कैन आई राइट S2 is equal to S2 dash plus Cp vapor ln T2 by T2 dash? All these I had explained in class sir, all these I had explained in class sir. Superheated entropy is S2 dash Cp of vapor ln T2 by T2 dash. All temperature should be in Kelvin. S2, what is S2 sir? Can I write S2 as S1? Can I write S2 as S1? Yes, yes. S1 is lower temperature Sg, lower temperature Sg, lower temperature Sg, 0.7082, 0.7082, S2 dash. What is S2 dash मित्रों, what is S2 dash sir? देखो एक बार, S2 dash is higher temperature Sg, higher temperature Sg, 0.682. Cp of vapor already you know, 0.747 into ln T2 by T2 dash. T2 is not known, T2 dash is already known, T2 dash is 313, already T2 dash is known. तो आप बताइए what is the value of T2? फटाफट बोलो सर, फटाफट बोलो। I am getting T2 as 324.17. Once T2 is known, the enthalpy at 2 will be, ये वाला ले लेंगे सर, हो गया सर, हो गया सर, we are leaving।
T2 is 324.17 minus 313. Is H2 value correct, sir? हाँ करो करो. Is H2 value correct, sir? गलत हुआ क्या? H2 value? हाँ. So the power input will be equal to, ये वाला इक्वेशन ले लेना सर. M dot 0.19216 into H2 minus H1, and H1 is बिल्कुल सही है सर. करेक्ट. अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. सारे डिफरेंट वेराइटीज करवा रहा हूं सर. ये करो. वाह, क्लास क्वेश्चन. आप देखो, कंसिडर दिख रहा है सर आपको? कैन यू सी? कैन यू सी सर? कैन यू सी? आज कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हैं. हाँ. कंसिडर टू स्टेज cascade refrigeration system between pressure limits 0.8 is the higher, 0.14 is the lower. Okay, right. No one is commenting. Is it okay? Shall I continue? अभी दो questions है sir. Only two questions are left. Shall I continue? Yes. अब देखो, limit. Actually there are two. इसको मैं zoom कैसे कर? हाँ, एक सेकंड. ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे सर. क्वेश्चन क्या बोला है? The working fluid is R134A. Heat rejection from the lower cycle to the upper cycle takes place in a counterflow heat exchanger, both at inlet. If the mass flow rate through upper cycle का mass flow rate is given as 0.32. The mass flow rate 0.05. The mass flow rate through the upper cycle is 0.05. What is the, which of the following statements are true? एंथैल्पी दिया है. अब देखो एक सेकंड. क्या क्वेश्चन है सर? वो बोल रहा है सर, एक्चुअली ही सेज, माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या बोल रहा है कि द लोअर रेफ्रिजरेशन सिस्टम साइकिल इज रिजेक्टिंग. जितना लोअर रिजेक्ट कर रहा है उतना अपर वाला ले रहा है. ध्यान से सुनो. तो लोअर वाला कहां रिजेक्ट कर रहा है सर? इधर देखो सर. देखो, कंडेंसर में ये यहां से लेकर यहां तक रिजेक्ट हो रहा है सर. तो कौन ले रहा है? इन द इवेपोरेटर, माय डियर स्टूडेंट्स, इन द इवेपोरेटर ये वाला ले रहा है सर. मित्रों, इन द इवेपोरेटर ये वाला ले रहा है सर. ये वाला ले रहा है. ध्यान से सुनो. जितना ये 2 से 3 रिजेक्ट कर रहा है उतना ही 8 से 5 ले रहा है सर. क्या ये बात समझ में आया सर आपको? ही क्लियरली सेड whatever the lower refrigeration system is rejecting, the upper is, मतलब लोअर का जो कंडेंसर है वो अपर का इवेपोरेटर है. सो इवेपोरेटर में से अब्सॉर्ब कर रहा है. तो अपर का इवेपोरेटर अब्सॉर्ब कर रहा है, लोअर का कंडेंसर रिजेक्ट कर रहा है. सो क्लियरली इट इज एन एडियाबैटिक. तो व्हाटएवर द लोअर वन इज रिजेक्टिंग, अपर वन शुड टेक. तो लोअर वन कितना रिजेक्ट हो रहा है?
mass flow rate of lower one into, it is rejecting from 2 to 3. So H2 minus H3. This is the heat rejected from the lower, should be equal to upper one is absorbing. So mass flow rate of upper one into कहां से absorb कर रहा है सर? 8 से लेकर 5 तक. It is H5 minus H8. Please tell me, is this energy equation clear, sir? Let me repeat, sir. So whatever this is rejecting from 2 to 3, तो मास देखो, कैंसिल मत करना मास रेट्स. इसका मास रेट अलग है, इसका मास रेट अलग है. लोअर साइकिल मास फ्लो रेट इनटू H2 minus H3 is the heat rejected by the lower fluid, and the same is absorbed by the higher fluid. So mass upper into H5 minus H8. All enthalpies are given. The upper mass flow rate, lower mass flow rate मुझे पता नहीं है. H2 minus H3. H2 is already given. मित्रों इधर देखो, H2 minus H3 यहां पे लिख रहा हूं सर. हाँ, H2 is 255.95 minus H3. What is H3? 55.14 should be equal to upper. Upper वाला flow rate दिया है 0.05. Is it correct? Into H5 minus H8. H5 is 251.93 minus H8. What is H8, sir? H8 is 95.48. कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? वॉट एवर दिस लोअर फ्लूइड इज रिजेक्टिंग, अपर इज अब्सॉर्बिंग. तो ये कॉन्सेप्ट सभी को मस्त क्वेश्चन है सर ये. तो यहां से फटाफट कैलकुलेट करो सर. इज इट करेक्ट? एक्सलेंट सर. 0.0389. यस, द मास फ्लो रेट थ्रू लोअर साइकिल इज, बिल्कुल सही है सर. 0.0389 बिल्कुल करेक्ट. दो ओके. द हीट रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस. एक बार देखना, प्लीज नोट डाउन दैट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रेफ्रिजरेटेड स्पेस. दिस द, यहां से हीट रेफ्रिजरेटेड स्पेस से 4 से लेकर 1 तक. This is the refrigerated space. From the refrigerated space, it is taking and rejecting it to higher cycle. Then it is rejecting to condenser. So therefore, ये refrigerated space है. तो ये lower cycle है सर. तो refrigeration capacity is equal to mass flow rate of the lower one. Lower one, it is absorbing from the storage from 4 to 1. So H1 minus H4. Excellent, sir. So अब देखिए सर. So what is the mass flow rate of the lower cycle? It is point RC will be equal to 0.0389. Mass flow rate of lower तो कितना आया सर? अरे यार मैं क्या कर रहा हूं. आप into H1 minus H4. What is H1, sir? H1 minus H4. H1 is 239.19 minus H4. H4 is 55.14. So RC will be equal to, is this correct? Is this correct? Yes. So it is 7.17. The rate of heat removal from the refrigerator. Yes, it is correct. It is correct. The power input to the compressor COP. Power input to the compressor. देखो देखो, यहाँ पे दो कंप्रेसर्स है सर मित्रों, दो कंप्रेसर्स है. तो व्हाट इज द पावर इनपुट सर? एक बार देखो, व्हाट इज द पावर इनपुट. तो अपर वाले का कितना इनपुट है सर? एम डॉट अपर, अपर वाला द पावर इनपुट इज 5 से लेकर 6 तक, H6 माइनस H5 प्लस लोअर वाला, दिस द लोअर साइकिल, M लोअर इंटू लोअर 1 से 2, तो H2 माइनस H1. क्या ये बात सभी को समझ में? आई रिपीट सर, आई रिपीट. अपर वाला इज फ्रॉम 5 टू 6, M डॉट 6 माइनस 5. लोअर वाला इज M लोअर 2 टू 1. तो अपर मास फ्लो रेट कितना है सर? 0.05 इंटू क्या है H6. व्हाट इज H6 सर? H6 is
270.96 minus H5. H5 is 251.93 plus M lower is 0.0389 into H2 minus H1. H2 is 255.95 minus H1. What is H1, sir? 239.19. यार ठीक है, 1.6 किलोवाट. Is it correct? Is it correct? Yes. तो अब पावर इनपुट इज 1.6 किलोवाट. ये भी सही है सर, ये भी सही है. Last one, COP. COP is equal to RC by power input. RC is 7.18 and the power input is 1.6. What is 7.8 by 1.6? 4.86. ये भी सही है सर. 4.48. बिल्कुल ये भी सही है सर. So I think I have given one equation. कुछ याद है सर? I think I don't remember. COP of cascade refrigeration is, ये भी सही है सर, ये भी सही है सर. Hope you understood. Total work input is this much. RC is this much. Already refrigeration capacity. So the ratio will give me COP. I think I have given the equation for cascade refrigeration COP. COP1 into COP2 by 1 plus COP. ऐसा कुछ दिया था. I derived the equation. The cascade refrigeration COP is COP1 into COP2 by 1 plus COP1 plus COP2. ये भी कर सकते सर. How can I calculate COP1? COP1 देखो, what is COP1? COP1 anyone? इसको 1 लीजिए, इसको 2. What is COP1? देखो एक बार, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H5 minus H8 by H6 minus H5, उसका COP आएगा. इसका COP क्या होगा? H1 minus H4 by H2 minus H1, इसका COP आएगा. So you put, you will get the same answer. करेंगे, करके मुझे कमेंट में आंसर देना चाहिए सर. I repeat सर, I repeat. तो अगर फर्स्ट वाले का COP चाहिए, you should get the same answer. अगर फर्स्ट वाले का COP चाहिए, it will be refrigeration effect. So 8 से 5 means H5 minus H8 by refrigeration effect by work input H6 minus H5, ये आएगा सर. उसके बाद लोअर वन का COP लोअर वन सेकंड वन का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H1 minus H4 by refrigerant by work input is H2 minus H1. तो यहां से COP1 आएगा, 2 आएगा, and put it in this equation. I think this equation is correct. मुझे याद नहीं पड़ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना सर. COP1 COP2 by 1 ऐसा कुछ है सर. तो you should get the same answer. करेंगे? This is your assignment. करेंगे? चलो, we'll stop here. So बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए सर हम. सो अब आपका टेस्ट है. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट. 2:30 को लेना है तो 2:30 को ले लो, आपकी मर्जी. सो प्लीज लीव इन कमेंट्स की सेशन कैसा लगा. लीव इन कमेंट्स, एंड इसका आंसर भी करेक्ट आ रहा नहीं आ रहा है, कमेंट में लीव करना है. इज इट ओके? होप यू अंडरस्टूड. ओके, चलो फिर आज के लिए बस इतना. अब लंच कर लेके टेस्ट लिखना सर. ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. ओके, बाय बाय. थैंक यू.